I don't know why every time I turn the music off, the volume jumps and then dies. But anyway, hi everyone, welcome to the live stream. This is Vimoh Live. I'm Vimoh and this is live. We go live on YouTube every Wednesday and Saturday at 8 p.m. and we talk about atheism, religion, contemporary Indian politics, culture, issues, and occasionally something deeper also. And even, movies and stuff. So if you want to talk about it's a Saturday after all, if you want to talk about that, feel free to do so. Uh, uh, yeah, I should probably remind people of this before I start talking. You may be listening to this as audio at a later point of time. If you are doing so on Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, etc., you're most welcome to do so. However, I wanted to inform you that I don't make any money from those platforms. So if you can, in order to support the channel, you can come to YouTube and listen to it on your mobile phone on the YouTube app, or on the desktop, because this is one way I make revenue that supports this channel's continued existence. There are other ways of supporting the channel, one of which is clicking the join button below and becoming a member of the channel. We have conversations every Wednesday. I take comments and answer questions, and every Saturday people come on screen and we talk. In fact, let me just share today's joining link in the chat right away. You will find a link pinned to the top of the chat. Not if you're listening to this at a later point of time, no, but if you're in the chat right now, you will. Then you can click on that link and come on screen, and we can talk to each other. We can You can ask stuff or raise your opinion. Give me your opinion. I would prefer it if you. I would give preference to people who disagree with me. So those will take priority. So if you do come, go into the private chat section and tell me what topic you want to discuss, and we will take it from there. You can also support the channel on Patreon at patreon.com/Vimo, or you can go to my blog at vimo.stck.me and make a one-time contribution there. It all helps. It all helps me uh, support my dirty habits like buying books and paying bills. So thanks in advance. You can also obviously send super chats. It's a live stream. There's a super chat button. You can press that. Or if you're watching this at a later point of time, you can click the super thanks button and make a contribution that way. So without much further ado, we have we have at least one person in the queue. But before that, let me just read a few comments. Um, mm, mm, mm. Hello, Arja Chatterjee. Hello, Kshitej. Hello, Arun. Barnali says, "Is AI really a threat to humanity? Can there be any alien civilization somewhere which has also developed AI that's even more advanced than ours? And what will happen if our AI meets theirs?" Barnali, abhi to matlab we are at a very very basic level of you know engagement with what we think is AI. There is significant debate about whether what we have right now is even AI or not. Many are of the opinion that this is not artificial intelligence. This is machine learning and text generation using that machine learning. So it may not even be AI. We're just using colloquially, we're using the term AI to describe it. As far as aliens and their AI is concerned, I don't even know if aliens exist. And if aliens exist, maybe they're not the kind of life form that we are. So maybe uh, I'm saying the if the possibility of aliens existing is X, the possibilities of aliens having AI is X minus Y. So yeah, what will happen if their AI meets our AI meets theirs? I hope they get married, and there's like khandani rishta between two planets because our AIs got married. Will they have marriage? Amit says bonjour, hello, vanakkam, namaste, bonjour, and all that. Yeah. Thank you, Amit. Thank you for being a member. Arja says, "What is your favorite story of Professor Shonku?" Arey yaar, I read it a long time ago. I have a vague recollection that each story was kind of sort of like the other one. Like there was not much variety because, or maybe there was, and I'm not remembering. But I remember there was a robot episode. Maybe that's the one I like most. Swapnil says, "Hi Vimo, how ethical productive it is to look people problems with lens of power dynamics." I don't know what that question means. How ethical and productive? I don't know why ethical and productive are in the same sentence. Uh, to look at people problems with lens of power dynamics. I see you've used a bunch of phrases. I'm not sure what you mean by them. I have a definition of them,
but I don't know what you mean by them. So, by the way, everyone who's on the queue, go to the private chat section and tell me what you want to talk about. It'll help me prioritize calls. um, Prajyot says, "Do you like the four horsemen of atheism? Which of them is your favorite?" Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, and Sam Harris. I will confess, I have not read anything by Daniel Dennett. I have read books by Richard Dawkins, Christopher Hitchens, and Sam Harris, and of the three of them, I like Christopher Hitchens best. But I will also point out that the books that I like of Richard Dawkins are his books on evolution. He's a great science communicator. His books on atheism, I like less. So, as far as books on atheism are concerned, I like Christopher Hitchens' books the most because he's the most scholarly among all of them. Sam Harris, I never quite like. I like his conversations. I suppose his books have merit also, but I personally prefer Christopher Hitchens as far as the atheism books are concerned. Lakshya says, "Namaste Vimoji, person waving." Okay, private chat में किसी ने topic बताया. Simple Toad wants to talk about family, how to talk to my family about me being an atheist. Okay. And Bhaskar has another topic, but I suppose Bhaskar came first. So let me take Bhaskar. Hold on. Hi, Bhaskar. Hello. Hi, how are you, Vimoh? Good, good. What's up? I'm good. I'm good. Thanks for asking. So, how's your health? Health is okay, sir. Thank you. Welcome, sir. Don't call me sir. You're embarrassing me. Okay, so Vimoh, actually, I just want to have a conversation with you regarding this black magic because last week, me and my brother were just chilling out in seashore. So suddenly, there's random topics we generally talk about each other. So he was just telling like, no, black magic is exist and it's for real because we have heard a lot of things within our family, from our friends, from our relatives as well कि Hmm. हमारे जान पहचान में किसी को तो हुआ है ब्लैक मैजिक सो आई विल टेल यू एन इंसिडेंट व्हाट हैपेंड Hmm. एग्जैक्टली सो Hmm. मेरे एक फूफा है सो ही लिव्स इन दिल्ली सो हिज यंगर सन वन डे ही वाज कमिंग टू होम from school. Hmm. So Hmm. suddenly he stepped his feet in the lemon. So after that, a Huh. few days later, he was just acting like mad, yelling at night. मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जैसे कि so Hmm. my brother was telling like, no, he had black magic. He had black magic. So I was just watching one of the podcast Ranveer Alabadia where they were talking about if you see any lemon or cross sign, any sort of colorful vegetables, don't go nearby it. You don't know what magical powers they have put it. So what's your take on it? Like, do you really think this type of thing exists? Because I don't think it exists. My But question would be, my what do you question would be, how would you know it was black magic? Something happened to someone. What would be the method to ascertain that it happened because of black magic? think? Yeah. Right? Yeah, exactly. I also thought about a lot of things, and similarly, my brother also shared about his friend's story. So my brother has done his engineering. So one of his friends used to tell like, एक बार क्या हुआ था कि he has a friend who stays in hostel. So he took us to some in darker room. So what he made is like a circle with a star, and Hmm. in every corner of the star they put a candles around it, and Okay. एक कटी हुई मुर्गी का सर रख दिया था बीच में, and he was just chanting like some mantras. After Hmm. that hen's head was just moving, एंड कैंडल के पास जाके उसने बुझा दी, कैंडल बुझा दिया सबके पास जाके, Hmm. एंड अंधेरा छा गया. एंड Hmm. व्हाट वाज द रिजल्ट इज दैट ही वाज जस्ट एक्टिंग सम काइंड थोड़ा अजीब तरीके से वो एक्ट कर रहा था, एंड माय ब्रदर्स फ्रेंड वाज सो स्केर्ड सो दे वेंट आउट. सो आई डोंट नो लाइक I always wonder why don't such things happen to me or to you or anyone else? Why does it happen to someone we Maybe know? because you're maybe because you think critically about it. Because my question remains the same. Something happens. Like for Yeah. example, आज मेरा पेट दर्द किया, right? Hmm. Yesterday I had ice cream, I had biryani, and I cycled 10 kilometers. Which was the reason? How will I find out? There is a Yeah. possibility that I have a stomachache because I cycled 10 kilometers. There is a possibility that I had a stomachache because of the biryani. There is a possibility that I have a stomachache because of the ice cream.
or there may Mhm. be a reason that I don't know about. Maybe none of these three are the reasons. How will I know why I have a stomachache? Mhm. Right? Yes. That's the point. Yeah. So black magic का जो claim होता है ना, there is no way to test it. There is no way to test many of the supernatural claims, but black magic, I suppose, especially applies because it is reliant almost entirely on, like Brown Panic here points out. I don't know why the majority of black magic and personal stories of experiencing God begin with terms like Fufa, Chacha, and Mama, right? They're very Yeah. anecdotal. Somebody heard something somewhere about something happening to someone, and we are like, hey, we have heard so many such stories. They're stories. Stories exist. Stories are everywhere. People tell stories about a whole lot of shit. Many times they tell these stories completely sincerely, believing that they're true. But I suppose the only criteria that we are left with at the end of the day is there a method to ascertain it? And there isn't. Hmm. There is no way. Yeah. How like even black magic practitioners, etc., if you ask them to prove, like some time ago there was this person who on my main channel was saying, अगर तुझ में हिम्मत है तो ये मंत्र पढ़ के देख. एंड आई एम लाइक, भैया हिम्मत की क्या बात है, तुम लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ, लाइव कैमरा Hmm. फेस टू फेस मंत्र पढ़ दो मेरे ऊपर, देखते हैं क्या होता है. पर माई कंडीशन इज, Okay. you have to tell me what will happen after you do so, बिकॉज़ अदरवाइज़ देन इट बिकम्स Hmm. एन एम्बिग्यूअस थिंग, राइट? मैंने मंत्र पढ़ा, उसके 15 दिन बाद किसी ने मेरा बटुआ मार लिया, देन यू सडनली जंप अप एंड देखा मैंने मंत्र पढ़ा था इसलिए हुआ. हाउ डू आई नो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट? Maybe it's just something that happened and you're just associating the two things. Exactly. Exactly. This is many things I've heard. Like it doesn't happen in within India. It happens all across the world. So Yeah. from that onwards, I started thinking rationally. Like, why does it happen everywhere? Like, हमारे मंत्र बाकी जगह पे काम नहीं करते क्या? Hmm. So this is from there only they expose. Like, No, expose कर चुके हैं वो in लोग अपने India, आप को. it's superstition, right? It's superstition. In India, the flavor of it tends to be so-called black magic. In other places, it's something else. There are faith healers in many countries. Uh, I suppose other religions which are not Abrahamic have their own version of supernatural beliefs. At the end of the day, they're just fueled by storytelling, good storytelling. Horror stories are amazing storyteller. Like my friend Swapnil does a live stream on YouTube on the channel Avirbhav, where he tells horror stories, right? And horror stories are very effective. They bring people together because stories that tell us that there is something out there that can get us have a very old tradition that goes back to pre-religious times, like when आदि मानव वगैरह Yeah. गुफाओं में रहते थे. हाँ, लाइक सर कुछ लोग एक आग के चारों तरफ सोए हुए हैं, सुबह उठते हैं उनमें से एक नहीं है, उसको कोई जंगली जानवर ने मार दिया होगा, राइट? मोस्ट प्रोबेबली. But Hello. how do Hello. we Hello. make Hello. sure that Yeah. other people don't go into the forest and become food for that same jungli janwar? They tell stories. There is a bhoot there, there's an atma there, there's a pret there. That's how these things started. And stories are effective because once someone is afraid of the dark, they will not go into the dark and therefore not fall prey to the animals that are waiting in the dark to eat them. So these things continue to exist and they still exist. People tell each other scary stories, and these stories have the unintentional side effect of bringing groups together. Mhm. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. So I always think like whenever someone claims like no, this type of things is real. So I think we should supposed to question them. Okay, so what if it happens to you? It happens to everyone. Have you faced anything? So let's say if a take my example, like there was a time in college days where I used to think a lot and I used to suffer from anxieties, and I Hmm. used to ask, have a conversation with one of my friends. He was a quite very religious person, so he used to say like, "Oh, तेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया है." Hmm. Like, how do you know? Like, I don't know how he claimed है. Like, हाँ हुआ है. तो तेरा मंत्र कर देता हूँ ठीक हो जाएगा. मैं मंत्र मंत्र किया कुछ भी करा उसने, and it couldn't able to go away. So I Hmm. just few weeks it happened, and one day I gone to my doctor, consulted to a doctor. So he told like, "Yep, it happens in this age because of the stressful life and all Hmm. this. So it's okay. So you perform some meditation, do some yoga, you will feel better. And if you have some problem, you communicate, you talk to Hmm. your family, share your thoughts, what you feel, because तुम बात करोगे तो मन हल्का होता है. So that's what I've done. So Yeah. eventually it all faded away. The problem is accountability, right? Whenever someone makes a claim about so-called black magic,
have some account, ask them to have some accountability. If you're saying black magic happened, A, how do you know? And B, the method that you're suggesting will cure it. How will I know it is that method that cured it? Because this happens with other stuff like homeopathy also, right? Somebody has a thing and it is about to go away वैसे भी, but then the homeopathy doctor gives a medicine and people say it happened because of the homeopathic medicine. How do you know it happened because of that? You can actually, Mm, like, medicine is based on experimental evidence. You take this chemical, you mix it with that chemical, you feed it to a person with a certain medical condition, and you have results. And then you compare those results with a broad spectrum of people who have that condition, and then you come to some kind of conclusion on the basis of your observations. So there is evidence for it. It's evidence based medicine. When medicine is not based on evidence, and when anything is not based on evidence, there is zero accountability. They can say that it happened because of black magic, and they can suggest a random solution, and if it gets better they can say it happened because of my solution, and if it doesn't get better they have no accountability. They can say, they mm. can just add another story to it. It happened because that magic was too strong, or you didn't do the ritual properly, or something. It's just stories upon stories upon stories. There is no basis to it. Exactly. This is what exactly happened in 2018, that Burari case, if you remember, where No. 11 family members have committed mass Oh, suicide yeah, yeah. because of this only. Huh. I don't know about Yeah. that. I know about the case. I don't know about the details of it. And anyway, I Yeah, want it to is. avoid. I want to avoid talking about suicide. Oh, okay, no problem. Yeah. So this is what they are doing, and they're like, okay, if you have any problems, so you can read again Bhagavad Gita, Mm, Upanishads, Vedas, because mm, Ramayana, Bhagavad Gita is real according to them. Because they claim like 7,000 years ago, somewhere 10,000 years ago, Ram Setu was there. There was a Dwarka city in Gujarat which sank inside the ocean or in sea. mm, See, mm, just because it is there, it means Ramayana was real and Mahabharat happened. It was real, and we mm. have seen the footprints of the human being, and that was Hanuman's footprint. How do you Mm. know? So they couldn't able to answer. This is like मान लो समझनी चीज नहीं है मान लो इस चीज को. Stories, right? Yeah. Stories. They've heard stories and they have accepted those stories because it makes them feel good, and that's enough for them. Yeah, absolutely. And what they like. भास्कर तुम्हारा आखिरी point है. I have to move on to, there are a bunch of people waiting. Okay, this is my last point. हाँ. I'm actually like there was a guy, Abhijit Chavra. He was just claiming that we all had this kind of proof in Nalanda University, but unfortunately it was burned. All the evidence went, so it is impossible to prove it was real. It was right. If it was So I'm like, impossible to prove, then how does he know it? yeah, exactly. Yeah. A lot of people That will is my say point. stuff and then try to substantiate it by saying there was evidence, but there isn't now. So it means that either they saw the evidence themselves or that they do have evidence. Because to say that there was evidence and there isn't any evidence now and therefore it is impossible to prove will simply make me ask you, then how do you know this? Exactly. People Yeah. don't ask it; they just follow it because कोई धर्म खतरे में ना आ जाए. Yeah. Cool. Okay. Chalo, Bhaskar. Thank you. Thank you for coming and thank you for asking such an interesting question. I know that you have been asking this question on a number of comments, right? Yeah. Yeah, okay. I saw your comment on two videos and then I went on Science is Dope and I saw that that comment was there also. So I said, ये आदमी तो पक्का आने वाला है कभी ना कभी. Exactly. चलो ठीक है. Bye bye. Bye bye. Thanks a lot. Bye. That was Bhaskar. Next is everyone who's in the chat, please come on the private chat section and tell me what your topic is in as few words as possible. Don't write an essay, just tell me the topic so I can decide who to take first and stuff. Next is Simple Toad. Hi, Simple Toad. Simple Toad. You were unmuted for a second and then you disappeared. Huh, I can hear you. Go on. Hello, hello. Yes, I Am I can hear audible? you. Go on. Yeah. Yeah, so I was talking about my yeah, yeah. Yeah, so actually I had an argument with my family members about my ideology, which is atheism, and so they were like, they are conservative Hindus, so Hmm. they didn't find it very right, and
Actually, I was, discussing with someone on the internet where my brother actually found out that I was, discussing about all these and trying to disprove the existence of God. And Hmm. apparently, my brother, told it in such a way that it sounded very rude or very, that made Okay. sound me wrong, actually. So, Okay. yeah, all this happened and I couldn't do much about it. And so, how do I talk to my family about atheism, and how can I make them accept me Okay. I'll tell you some if stuff, it's but possible in any way? before I start, two questions. First of all, are you feeling all right? Simple toad. Yes, I'm all right. I have to talk slowly because my parents are in the next room. Oh, So, that's okay. I thought you were unwell. Cool. The second thing is, I don't know your family, so it is going to be difficult for me to am I? understand the kind of relationship you have with them. Like some people are No, I'm chill, good. some I'm people good. are not chill, some people are Hmm. very closed to new ideas. So I don't know what your relationship with your family is. Do you find that you can talk to do you talk to your the people who you are trying to talk to about your atheism? Do you talk to them about politics? Uh, Simple toad. no, because I share a different ideology, so I don't share the same ideology as same they do. So they are So right what do you wing, talk about? they're right wingers, and What do you talk about normally? I'm nothing much. Just actually, apparently, I'm 18 years old and I've just completed 12th standard. So I talk about which college I'm gonna go to, or in general, I don't really talk much about politics. But yeah, I do criticize a few, one or two points about Modi if something wrong, some Okay. if he does something wrong. Okay. So they So do allow a would your little bit life of debate and so my question would be, would your life be greatly affected if you did not talk about atheism with them? yes, it would be. How? See, because the moment my mom got to know about all this that I'm talking about, trying to prove Krishna, or that he's Vishnu avatar and all, prove that I tried to prove these wrong. She's like, "How can you do so? Don't you have any shame? You have ashamed us." And my Okay. dad was like, "You should keep your mouth." So she didn't say much, but yeah, he was like, "Don't talk about these things openly on the internet. They can find you anytime," and all those. And my brother was like, "You don't know anything. Why do you simply talk?" Although he never seemed to have any problem with my atheism. My brother, he's my elder brother, so I Hmm. think I've already talked to him earlier about these existence of God, universe, and all evolution. He did not seem to have much problem, but my mom and dad does seem to have a bit of problem with Okay. that. So I suppose you can be, if you are really interested in convincing them, what exactly are you trying to convince them of? They already know that you do not believe. Yeah, So what are you trying to convey to them? What is it that you would like them to understand? I would like them to understand that I tried proving Hinduism a very good religion in which debate and discussion takes place. Like earlier in times, we had Charvaka community, which were Hmm. kind of non-believers at that time. So I tried Hmm. to do this. They're like, "No, you're lying. There was no such thing." And Okay, so then yeah, it's just a these matter I of tried them these not having simple access to the methods. resources that you have access to. You can share resources with them. Yeah, correct. You can show them. Mm, You can show them books, videos, documentaries. Maybe if they are really closed to the idea, maybe you can just mm, show them stuff that mentions this stuff as by the way, mm, and maybe mm, they will become open to it over time. Because I'll tell you something, it seems very unlikely to mm, me, given that your parents are like, if you in your family you say something like this, your parents get angry. It seems unlikely to me that by raising the topic and harping upon it you will change their mind. What might mm, happen is that, like, if you find yourself in a situation where you have to defend your position,
then talk about it. Hmm. But if you find yourself in a position where you Hmm. don't have to, then don't get into it. Hmm. It doesn't really matter that Exactly. much. You're not going to change their Hmm. mind. They're not going to change your mind. You're a family, you're their son. uh, I'm sure there are other things you can talk about. If their behavior is Sure. causing active damage to you or someone else, then point it out, and then talk about it. And at that point, I suppose there is no way to avoid making it uncomfortable. If they're doing something bad and you say you're Hmm. doing something bad, they will feel bad, but that's okay. But Hmm. if in most situations of life you find that you don't have to talk about it, you've already conveyed, right? Hmm. They know you are an atheist, you don't believe. You don't have to continue Hmm. telling them this. If you lie Yeah, low, exactly. I'm not saying like, oh, lie low is not the right phrase. If you remain convinced of your position and are not aggressive about it, let them bring up the topic. And then whenever they bring up the topic, talk about it very, clearly and calmly, so that they don't start thinking of you as someone to fight at home every day, nor do you Hmm. become habituated to living in a family where you have to fight every day. If Hmm. you guys all start thinking of the home as a battlefield, then battle is the only thing that will happen there. Allow the home to be Exactly. seen as a home, Hmm. so that Hmm. whenever the conversations happen, they remain limited to being a conversation. Hmm. Does that make sense? Yes, 100%. Thank you very much. And apparently, you know what's been happening? There's some guy. I won't take the name. I don't know what's gonna Hmm. happen. I live in UP, so that guy is basically what do I call him? Kind of astrologer. He does Hmm. palmistry. Palmistry Okay. means हाथ की लकीरें हाथ देखना. देखना, हाँ हाँ So हाँ. he does that, and हाथ देखना, yeah. So he basically does that, and my parents were convinced, after visiting him. But my dad is basically a rational person, to be very honest. He does not believe Okay. much in astrology or anything, but this guy actually convinced him, like, my grandparents took my parents to this astrologer, or whatever we call him, and this guy read hands and told something, and after some time a similar thing, or astonishingly close thing, happened, like predicting futures. Like, for example, I'm going to join a college, so he said, do this, you'll get the top university, do that, you'll Hmm. get this university. Hmm. And first, he won't directly say do this to get this university. First of all, he'll Okay. point out where you actually stand according to his method of predicting. So he'll predict, I mean, he'll say, like, first of all, आपका ये अच्छा नहीं दिख रहा, चंद्रमा में ये है, and all those shit which I don't Hmm. uh, Hmm. think is appropriate. He tells that, and after that he tells, do this 3 times or 5 times, and you'll be granted this thing after some Hmm. time. You'll get into that Okay. particular place where you want to go to. So I have no Hmm. idea how does that make sense, and my parents do believe in that. So how do I save my parents from that, if I can, if from if my this if position? believing in this thing and That's the acting question. on these things, is it doing in some kind of active damage to them? Don't you think it's irrational to? I know you definitely believe it's irrational. All these things are Yeah. irrational and Yeah. baseless. So No, I'm it saying doesn't you have matter if every it's right. creating anything. Yeah. No, I'm saying it does Hmm. matter. I'm saying ki, uh, Hmm. if something is doing visible active damage to someone, by all means point it out. And if it is being imposed on you, feel free to say, listen, Hmm. you guys are free to believe what you want, but I will not be a part of this. But when you take it Exactly. to the point where 100%. you say, I don't 100%. believe How in do you this think? and I don't want you to believe in this, then you are putting an impossible choice in front of them, because people usually cannot control what they believe in. Exactly. Hmm. You can give them the facts, right? But after that, let them come to Hmm. their Hmm. own Hmm. conclusions. Don't become this, Hmm. missionary atheist who is at home telling people this is wrong, that is wrong, because then the situation only gets worse. If you Yeah. as I said, if your parents start seeing you as someone they have to fight every day, your problem will not go away, it will only get worse. Stand your ground.
exactly. Draw a boundary Hmm. that you will not allow people to cross with you. But outside of that, as long as it is not doing active damage to people, try to stay out of it. With family, it becomes complicated. That is why I'm saying this. No, but once you've started visiting that person makes you believe Hmm. that he actually can see the future. So apparently, what happened is, after some time, some serious situation happened, and my mom called up that Yeah, guy that's true. instead And of you should calling see someone that is active important. damage. That is active damage. So when Exactly. that happens, Yeah. if it's a one-off Hmm. thing, if it's a one-off thing, you can just draw a line and you can stay on the safe side. If it becomes something that is actively damaging, then I would suggest having conversations with your parents. And if you are unable to convince them, there must be other members in your Hmm. extended family who are, uh, not Sure, I do believers of have. some stuff like that. Bring them into the equation, because the problem Hmm. between parents and children is that your parents watched you wearing a chaddi and shitting all over the place, right? It is going to be hard for them to take you seriously. Parents always have a difficult time taking their own children seriously. कि हमने इसको चड्डी पहन के भागते देखा था, इससे क्या सीखेंगे हम? So if you have a serious enough problem and you find that you're unable to convince your parents, you can bring an other member of family into the picture and have them talk to them. And one of the main reasons might be that I'm the younger son, and people have Yeah, it less happens. trust. Parents have I'm less also the trust young in the son and younger it son happens. Yeah, than in the yeah, elder yeah, son. yeah. But trust me, I'll tell you Um, something good. Once you have yeah. crossed that barrier, by the way, Hmm. once you have managed to convince your parents of one thing, uh, the chances of them listening to you in the future, I think, will go up. Again, I don't know them personally, but in my experience, I have found that if parents start seeing the son as someone wise enough to listen to, it has a tangible effect on future conversations also. Hmm. Simple Toad, if it's all right, can I move on Yeah, to the man. next caller? Sure, sure. Thank you very much, Vimo. I'll sure come back to thank you once everything gets all right. Thank you so much. Cool, cool. If it gets all right. But I hope it gets all right. Thank you. Thank you. Yeah, it will. It will. Mhm. Hope Right. so. Thank you so Hello. Bye much. bye. That was Simple Toad. So there are like five more people and 31 comments. Hold on. I can't read all the comments right now, but I will try to get to some comments after I'm done with the callers. Maybe I should end the calls now. There are five people, and after that, I won't take any more people. So let me just remove the link, the joining link. Yep, it's removed. Uh, right. So the next person is Nuance. Hi, Nuance. Hey, hope you're doing well. So, Yep. I wanted to talk about polarization, especially amongst young people, and why Okay. generating it is Okay. easy. I Hmm. mean, why is it that there are people who would commit violence today against some people of other religions? Hmm. Uh, when I mean, why do they identify more with somebody 400 years ago than with a contemporary person of an opposite faith? Like, why is 300-year-old prosecution still a thing? Obviously, like a Hindu today has less in common with a Hindu 400 years ago than with and has more in common with a contemporary Muslim. So Hmm. I just don't understand, especially amongst young people, like how are these tools still working to get people to generate hate and to get people to start fighting? Okay. Are you asking me? Yeah, so the point is like what is your theory on why this is? My theory is that young people are stupid. Forget young people, like I mean that goes without saying, but Yeah. My theory is no. that people are stupid. No, Yeah. I think we have this. I was half joking, but only half joking. We have this entire evolutionary history of tribalism, and it is not gotten rid of so easily. And anyone who figures this out, anyone who realizes that by feeding on communal passions like hum log or wo log, anyone who figures this out will rise to the top in any human society. We're basically monkeys, and our No. societies are basically monkey tribes, and a whole lot of social power is derived from storytelling.
Storytellers are some of the most highest paid people on the planet. Look at Hollywood, right? Soldiers don't make money that much, teachers don't make money, but storytellers make a lot of money, especially when they have met with some kind of success. There are no millionaire teachers, there are no billionaire uh, uh, soldiers, but storytellers, if they play their cards right, can become some of the richest people in the world and some of the most powerful people in the world. And this has to do with the fact that our society responds very passionately to stories. Anyone who is a good enough communicator or a storyteller will rise to the top by just feeding. It doesn't even have to be good stories, it can just be stories that make you afraid or stories that make you think that those people are against you. So people fall for this or kya? And I think the reason a lot of people fall for this in at least India is because we don't tell people how to process fiction. हमारे यहाँ आर्ट्स एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता. So most people don't realize they're dealing with literature when they're looking at political propaganda. Most people think that um, uh, stories are literally true. You'll find a lot of superstitions fueled by movies. Someone goes in, watches a good movie, comes out and thinks maybe there are aliens. Why does he think so? Because the movie made a very convincing case for aliens. So this is not unheard of at all. You'll see a lot of Indian reelers and short makers where they will like, क्या आपको पता है मार्वल मूवीज का ये एस्पेक्ट हमारे वेदों से लिया गया है. Why does he do that? He was very impressed by the Marvel movie and he wants reality to be like that. And because he also does not understand how to process fiction, he starts thinking ki maybe it is real, maybe it should be real. Who knows what could be true? And then he starts a podcast that is called India's Smartest Podcast. But I'm digressing. Yeah. So for me, where this line of thinking started on was with the recent hijab issue that happened in the few colleges that it did. Amongst the foremost in opposition to Hmm. women wearing hijab in those colleges were their own classmates who were Hindus. Hmm. And to me, that is inexplicable because, I mean, now that you explain it and I think about it, I kind of get it. But my visceral reaction is to me, it's inexplicable because I would always take the side of my classmates over anything else. And at Yeah, least tribalism. from from Yeah. from what I remembered in school, that's how it used to be. Like even if you in general hated people in your class, as a whole, you would take the side of the people in your class versus other people. And it's just to me, it's strange that their own classmates are the one who are like up in arms against their choice of clothing. So yeah. Hmm. Yeah, so it's tribalism. It's people looking to build stronger relationships with people who talk like them, who look like them, who dress like them, and who speak the language that they speak. Yeah, it's it, it's depressing to be honest. But cool. It is. It's. See, here's the thing. I choose to look at it slightly differently. If stories can be used to divide society, stories can also be used to unite society. Yeah. Right? My The, Instagram yeah. name, my name on Instagram is words are weapons, and a lot of people think that I'm saying, yeah, haha, I'm able to use words like weapons, but I mean that every word is a weapon. The most inspiring, uniting, harmonious speech is a weapon, but every hate speech is also a weapon. We have created society with words. We can destroy society with words, and for better or for worse, that is the world we live in, and that is the kind of animal that we are. It is what it is. And if you believe that people should not fight, then our moral responsibility, I think, may be seen as trying to build a better society by uniting people using our words. And that's kind of what I'm trying to do with the channel also. Yeah. Yeah. Just the last point. So in that case, like, do you think that the like in the early years of independence and throughout those times, the sort of the narrative or the story that was Hmm. told to unite people was like the shared experience of Hmm. colonialism and the fight against that, and that was sort of used as a binding factor. Do you think there was errors in the way that was done because it looks like that has failed now, and people really don't care about that? There are identities that are far more uh, closer to people than any idea of a shared nation would be. Yeah, I agree. Is that all?
Yeah, looks like we're just going to have to find better stories then. But Yeah, man. I don't Like see one it's coming. always going to Yeah, be about stories. yeah. Stories are the invisible giant monsters that are fighting each other on the horizons, and they exist only inside our heads. But what to do? क्या कर सकते हैं? Thank you, Nuance. Bye bye. Cool. Thank you. Bye. That was Nuance, and the next caller is hmm, hmm, Ronnie Boy. Hi, Ronnie Boy. Ronnie Boy wants to talk about how atheism is labeled as coolness by the right wing. They should talk. Hi, Ronnie Boy. Go on. Vimoh, what's up? Wait 1 second. कोई बड़ी भयानक मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं मेरे पड़ोस में, इतने जोर का वाइब्रेशन हो रहा है कि मेरी खिड़की हिल रही है. हाँ, गो ऑन. So, आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा. हाँ. मतलब you are getting it what I'm saying. Yeah, but do you want to say it one more time because of the audience? तो मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, मैंने इंडिया की स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट के एक शॉर्ट में देखा. You know who? So he was saying like कि उन्होंने एथिज्म ज्वाइन किया क्योंकि उनको उस टाइम पे लगा कि वो बहुत कूल है. Yeah, I'm atheist. Like हाँ. और लेकिन अगर ऐसे जनरली बोलूं, लाइक मैंने किसी भी इंसान को मेरे सामने से आके बोलते नहीं देखा कि मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मुझे बहुत कूल लगता है. मतलब Actually, I agree with him on that. I think there are plenty of atheists in India who are only atheists because it's cool to be an atheist and who have not given it any thought. Beer Biceps is one example of it. He said, and I don't disagree with him, he said that he became an atheist because he's cool. He's exactly the kind of person who will become an atheist because it's cool. And he's exactly the kind of person who something will happen to him and he'll say, नहीं मैं अभी atheist नहीं हूँ. It's weak-mindedness. It's lack of integrity and lack of commitment and lack of thought. So इंडिया में बहुत लोग हैं जो एथिस्ट हैं. उसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान जो एथिस्ट है वो सिर्फ कूल बनने के लिए एथिस्ट बनता है. बट लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग प्रो रिलीजियस बन जाते हैं क्योंकि उनको वो भी कूल लगता है आजकल के. देखो हमारे रीजन को तो ये सालों पहले से पता था, या ये फैक्ट हमको पहले से पता था. अभी तुमसे पहले जो कॉलर आए थे नुआंस, हम उनसे जो बात कर रहे थे उसको सुना था? नहीं. ओके, सो हमने बात की कि हमारी सोसाइटी स्टोरीज के बेसिस पे फाउंडेशन उसका हमारी सोसाइटी का फाउंडेशन स्टोरीज है. जो भी स्टोरी कूल लगेगी लोग उसको अपना लेंगे. रिलीजन्स प्रोपेगेट क्यों करती हैं? क्योंकि किसी को लगता है वाह ये रिलीजन बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में. सो अगर बहुत सारे लोग एथिस्ट बनते हैं और अगर एक एटमॉस्फेयर बनता है कि एथिस्ट स्मार्ट हैं, एथिस्ट कूल हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो एथिस्ट बनने की कोशिश करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कूल है, विदाउट गिविंग इट थॉट और विदाउट रीडिंग अबाउट इट. उसी प्रकार अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कूल लगने लगेगी, चारों तरफ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, चारों तरफ लोग उसकी बातें कर रहे हैं, उसके रंग के कपड़े पहन रहे हैं, उसकी चैंटिंग्स कर रहे हैं, उसके नेताओं के फोटोज दीवार पे मार रहे हैं, तो लोगों को वो भी कूल लगेगा. इट्स अबाउट ट्राइबलिज्म. हम लोग बंदर के वंशज हैं. हमारे अंदर वो एप्स वाली बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. एप्स की सोसाइटीज़ मतलब हमारी जो सोसाइटी के जो ट्राइबलिज्म है वो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है. Hindu is an identity, Muslim is an identity, atheist should not be but is an identity, and therefore people just want to belong to any of these categories in order to belong somewhere. People want to belong to a category. किसी को लगता है कि मुझे धर्म के साथ डील ही नहीं करना. उसके कैटेगरीज होते हैं, मैं लीग ऑफ लेजेंड्स कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ या मैं वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट कैटेगरी में डिपेंड करता हूँ. वो सबके लाइफ के होराइजन के ऊपर डिपेंड करता है उनको क्या क्या दिख रहा है. क्या मैं यूट्यूबर हूँ या मैं इंस्टाग्रामर हूँ या मैं ट्विचर हूँ या मैं किकर हूँ. डिपेंड करता है लोगों के होराइजन पे क्या क्या ऑप्शंस हैं. और अगर किसी के होराइजन पे ऑप्शंस पॉलिटिकल हैं या रिलीजियस हैं तो वो इन कैटेगरीज को चूज करके उनमें बिलोंग कर जाएंगे. आइडियली होना ये चाहिए कि किसी कैटेगरी को बिलोंग करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर ये कई केसेस में नहीं होता है. बट आई स्ट्रांगली थिंक कि ये बहुत जो मतलब जो रणवीर ने अपने पॉडकास्ट में बोला बहुत वेस्टर्नाइज वर्जन था उसका, क्योंकि इंडिया के अंदर रिलीजन एक बड़ी चीज तो है लोगों के लिए. तो वो ऐसे ही नहीं बोल रहे नास्तिक बन जाए, क्योंकि
ये चीज तो देखो है इंडिया के अंदर कि लोग नहीं, मोस्टली अपने रिलीजन से बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, कुछ भी फटाक से ले लेते हैं उसपे, तो इतनी जल्दी तो नहीं। मैं बहुत छोटा पार्ट होगा एथीस्ट का इंडिया में जो कूल बनने के लिए एथीस्ट बना होगा, पर मैंने तो ऐसा कभी कोई देखा नहीं है कूल बनने के लिए एथीस्ट बन गया, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से आसपास मिलता हूँ वो मोस्टली रियलाइज करके वो चीजों से एथीस्ट बने, या फिर अभी भी प्रो रिलीजियस है, बीच में कोई भी कुछ नहीं आता, और कूल वाले तो कहीं नहीं होते। देखो तो उसमें ये ये होता है लेबलिंग कि हुई एक तरीके, क्योंकि मोस्टली आज के देख टाइम में देखा लेबलिंग हो रही है एथिज्म की देखो इंडिया में। कुछ लोगों को इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन, राइट? कुछ लोगों को लगता है कि मैं सबके जैसा बनना चाहता हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि मैं सबके जैसा नहीं बनना चाहता। तो जो लैटर कैटेगरी है ना, उसको लगता है कि अगर मतलब अगर कोई परिवार है या कोई मोहल्ला है जहाँ पे पूरा धर्म में सब कुछ डूबा हुआ है, तो 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो इस कंप्लीट इमर्जन में कंफर्टेबल फ़ील करेंगे कि हाँ, मैं सबके जैसा हूँ, सब मेरे जैसे हैं और हम सब एक जैसे हैं और हम एक तरह से सोचते हैं। दे फाइंड कम्फर्ट इन दैट। एक दूसरा कोई होगा जिसको सफोकेटिंग लगेगा कि यार सब के सब एक ही चीज़ सोच रहे हैं, मैं थोड़ा अलग बनूँगा कुछ। मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं मानता। मैं अलग कलर कलर के कपड़े पहनूँगा, मैं अलग धर्म को फ़ॉलो करूँगा, मैं अलग पॉलिटिक्स फ़ॉलो करूँगा। ये भी होता है। सो जब कोई चीज़ इमोशनली अटैच करने वाली लेवल तक पावरफुल होती है, उसके 2 रिज़ल्ट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उसको लोग कोई फ़ॉलो करेगा, दूसरा ये हो सकता है कि लोग उससे उचट जाएँगे और दूसरी दिशा में जाने लगेंगे। ये भी होता है। हाँ मतलब पर लाइक मैंने अभी भी जैसे मैंने बोला कि मैंने किसी ऐसे रोनी, तुम्हारा रिगार्डिंग आवाज़ टॉपिक साफ-साफ नहीं आ रहा है। किसी बेटर ना, हाँ, लाइक मैंने जैसे पहले बोला कि मैंने कभी किसी को ऐसा कन्वर्ट नहीं किया जो कूल बनने के लिए चीज बना। हाँ, तो होते हैं ऐसे लोग, मैं वही बोल रहा हूँ। मे बी यू हैवंट बट मेट इट देम बट ऐसे बट इट होते हैं। डू यू थिंक इट इज डैमेजिंग एथिज्म इन इंडिया और इमेज ऑफ एथिज्म इन इंडिया? आई डोंट थिंक एथिज्म इज बिग इनफ टू रिसीव डैम मतलब ये क्या है पता है ये एक आदमी जमीन पे पड़ा है 50 डंडे खा के किसी ने उसके ऊपर एक और कंकड़ फेंक दिया अबे हमारी हालत वैसे भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी इससे क्या डैमेज होगा। सो डू यू थिंक दैट एथिज्म इज लाइक मैंने जहां तक सुना है कि मोस्टली अभी मतलब लोग बोलते हैं कि मोस्टली इंडिया में जेनजी लोग ही एथिस्ट हैं। नहीं ऐसा नहीं है इंडिया में बहुत सारे बूमर हैं जो एथीस्ट हैं इंडिया में बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जो एथीस्ट हैं हाँ सबके एथीज्म को एक्सप्रेस करने के तरीके अलग होते हैं पर एथीज्म का ऐसा रिलेशन एज या वगैरह के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीजें अभी पसंद नहीं आती जैसे कि वीगनिज्म को देख लो, वो भी सॉर्ट ऑफ ऐसा बन गया कि लोग कूल बनने के लिए बोलते हैं, बट लाइक वीगन्स क्या कह रहे हैं वो समझना भी पड़ेगा पहले या उनको कूल एग्जैक्टली बोलने से पहले। या ऐसे लोग हैं जो कोई चीज़ फॉलो करने से पहले सिर्फ कूलनेस को एक फैक्टर के रूप में देखेंगे पर आइडियली होना ये चाहिए कि किसी चीज़ किसी व्यू को सब्सक्राइब करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वो है क्या उसके बारे में पढ़ना चाहिए ये देखना चाहिए कितना सूटेबल है वगैरह। आइडियली वैसा होता नहीं है पर क्या कर सकते हैं। एंड आई डू वांना टॉक अबाउट सम चैनल्स, दो या तीन चैनल्स ऐसे कुछ जो स्ट्रेट हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं। हम्म एक एक मैं नाम नहीं लूंगा पर एक चैनल ऐसा है जिन्होंने लिटरली लाइक उनके 2.5 से 3 लाख सब्सक्राइबर और उन्होंने खुले में बोला उनके चैनल पे, हर वीडियो में ये बोलते हैं कि वी शुड लाइक हमें सारे मुस्लिम्स को इंडिया से साफ कर देना चाहिए या ऐसी बातें। हम्म वो 2.5 लाख या 3 लाख के चैनल पे बोल रहे बैठे इनको बैठे। रिपीट करो ना रिपोर्ट करो सॉरी ऐसे वीडियोस को पे जाके तुम रिपोर्ट कर सकते हो यस पता है ना। आई एम रिपोर्टिंग एवरी वीडियोस ऑन या देयर चैनल। या यू शुड। लाइक यूट्यूब उन हैज़ दिस ढाई यार यूट्यूब जितने भी सोशल नेटवर्क है उनमें से शायद मतलब सारे सोशल नेटवर्क्स प्रॉब्लमैटिक हैं, यूट्यूब भी प्रॉब्लमैटिक है, पर यूट्यूब के साथ एक चीज़ होती है कि अगर तुम रिपोर्ट करते हो तो कभी-कभी कुछ फ़ायदा मिलता है। सो रिपोर्ट क्योंकि करते रहो, लाइक हो सकता है फ़ायदा क्योंकि मिल जाए। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत अजीब है, क्योंकि अभी ऐसे 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 चैनल्स को तो डिलीट हो जाना चाहिए था कब का, 2.5-3 लाख पे पहुंच गया, लेकिन अगर एक हाँ, वीडियो तो में आप रिपोर्ट करते रहो रेपी ना, रिपोर्ट करते रहो, क्योंकि उम्मीद है कभी ना कभी डिलीट हो जाएगा। लाइक अभी आप किसी चैनल को देखो उन्होंने रेप या सुसाइड जैसा वर्ड यूज कर दिया वीडियो में, तो वीडियो या तो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। पर लाइक अभी चैनल में जहाँ पे पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन को साफ करने की बातें हो रही है, हेट मॉन्गरी हो रही है हर सिंगल वीडियो में, तो हुँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हुँ, हुँ।
क्या कर सकते हैं? अभी यूट्यूब के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हम यही कर सकते हैं कि वो लोग जो इस मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं, हम उसको काउंटर करें अपने मैसेजेस से, और उनके मैसेजेस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए यूट्यूब को रिपोर्ट करें। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? And I'm like एक और point, and I'm thinking to start a YouTube channel. Good, you should. So do you have any suggestions? Yeah, start. Like वो स्टार्ट ही आपकी सबसे आपकी बड़ा स्टार्ट ही सबसे बड़ा स्टेप होता है. You will realize like that more than half the people who don't get around to doing something have one problem, and that is that they're afraid to start. So start कर लो, 50% तुम्हारा हो गया काम. उसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल हैं, देखा जाएगा, पर स्टार्ट तो करो पहले. but वो मतलब वो ऐसा एथिज्म की लाइन में तो नहीं है वो. हाँ, तो जिस It's चीज़ के ऊपर very भी different genre. I am sure you're a good person. You will not start a channel on a bad topic. जिस भी टॉपिक, जो भी टॉपिक तुमको मूव करता है, स्टार्ट करो. Even if it is as simple as just holding the phone to your face and saying, hey guys, I'm starting my YouTube channel. This is what it is going to be about. Put up a video. You'll find that the second video becomes slightly easier. The third video becomes easier than that, and stuff like that. मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से, क्योंकि भी उन्होंने मतलब मैंने एक रोनी, तुम्हारी बात बहुत मफल्ड आ रही है. ओके मैं हैंड फ्री मूव कर देता हूँ. हाँ, इनसे हेलो. मतलब हाँ, इज इट क्लियर ना? या इट्स क्लियर. बोलो. क्लियर है ना? तो मैंने उनसे एक पीसी की डिमांड की थी और उन्होंने उसके लिए मतलब हामी भर दी, और काफी एक्सपेंसिव वाला सेटअप में लगाने का सोच क्या रहा उन्होंने, मतलब हाँ बोल दिया, बट उनकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस चली गई कि सो आई एम डू रिग्रेटिंग इट नाउ. उनकी क्या एक्सपेक्टेशन हो गई? लाइक मैंने पहले काफी सारे वादे कर दिए जो मुझे लगता है कि अब मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा. क्या वादे किए थे? अबाउट यूट्यूब चैनल्स की in a year I am able to like earn a Ouch. good amount, but in a year I'm not like अभी मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है, तो उनको काफी So make ज्यादा a plan. एक्सपेक्टेशन Make a plan. Do this. Make a plan. Uh, if you can, if you can talk to them again and say, listen, मैंने 1 year कहा था, but give me 2 years. Then do that. Make a proper plan. Do some content topic research, and then start your channel. because And even if that but the does not thing is, happen, even if the YouTube channel does not happen, you still have a okay, PC, and there are a number of things you can do with a computer, right? yeah, Yeah. but the thing is कि बहुत मतलब मैंने पहले like मेरा बजट था like something like 40,000 rupees and I'm going for second hand, but it Okay. now like it मतलब ऐसा है कि अब पार हो गया, लाख के पार हो गया. अच्छा. बट स्टिल माय पेरेंट्स अग्रीड. लाइक मैं इतना कोई मेरे पेरेंट्स को इतने रिच तो नहीं है, बट उनके मतलब मेरे मेरे पापा का बजट लाइक 40,000 था, वो भी उन्होंने सोचा था कि लाइक वो It's so तुम adorable. देखो, Okay. बट No, अभी लाख parents के are बाद so वो adorable. Like, don't feel so under pressure at this moment in time. If you have a PC, start the thing. If you start doubting yourself at this point, your chances of making it go down, not up. So have hope, be optimistic, make a plan, and start your channel. And we'll see. Whatever help I can give, I'll try to give. Okay. because by the way I just passed my 12th exams, Okay. and This is a great time for to a start. hint, for a hint it was horrible. For what it was horrible? परसेंटेज बहुत लाइक एक्सपेक्टेशंस, अच्छा. लाइक अब मेरे एक्सपेक्टेशन से जितने आने थे उतने ही आए, बट मेरे एक्सपेक्टेशंस ही काफी लो थी. तो Okay. मैं अभी मतलब आई एम जस्ट गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज, नॉट इन अ टॉप काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, बट सो लाइक अभी मेरा ऐसे टाइप मतलब ऐसे लाइफ का एक बहुत लो पॉइंट चल रहा है, परसेंटेज ट्रस्ट मी खराब है. रोनी भाई, तुम जिस पोजीशन में हो ना, इस पोजीशन से बहुत से लोग गुजरते हैं और सबको लगता है कि उनके अलावा किसी के साथ नहीं हुआ है. दिस इज लाइक बीइंग इन लव. एवरीवन हु फॉल्स इन लव थिंक्स दैट ये अजीबो गरीब फीलिंग मेरे साथ क्यों हुई है, ये सबको होनी चाहिए, और उसका जवाब होता है कि बेटा हो चुकी है. सो पीपल आर गोइंग थ्रू वर्स्ट टाइम्स. आई एम श्योर यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, but it won't last. It will get better. Don't worry about it. It always gets better. The world continues to spin. Life continues to move on. You have a PC, you have an internet connection, and you have loving parents. That's more than what most people have. So figure something out. Don't worry about it.
yeah, like this is the thing. I do care about my parents and what the expectations they have. Yeah, you should, but you should not क्योंकि let it paralyze you. बट मैं अभी मतलब मैं तो श्योर लाइक अभी इस सिचुएशन में श्योर हूँ कि पढ़ाई पढ़ाई इज नॉट समथिंग दैट आई एम इनटू Hmm. सो आई जस्ट लाइक आई एम डूइंग माय कॉलेज फॉर मतलब मैंने उनके सजेशंस पे किया कॉलेज उन्होंने बोला कि यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री सो just do Okay. a college and whatever do you can do whatever you want to with your PC. So We we'll will get talk you a about PC. Ronnie. We'll talk about your career plans at some other point of time. Okay, okay, Uh, okay. क्योंकि आज का अभी और 5-4 लोग बाकी है और मैं ऑलरेडी 59 मिनट पे पहुंच चुका हूँ, 1 घंटा हो चुका है, 4 लोग बाकी हैं, ठीक है? So Just I'll this, move on to the I next just caller. want to talk about us a little bit incident I happened. I just had a fight with my रोनी, आज टाइम नहीं होगा यार, friend. बहुत टाइम Like नहीं no होगा, 1 on घंटा हो atheism. चुका है, 1 घंटा हो चुका है, टाइम नहीं मेरे पास, Okay, okay, 4 लोग बाकी हैं। okay, okay. Thank you. लेट्स टॉक नेक्स्ट टाइम, चलो बाय बाय। Okay, thank you. Even it's my fault only. I let Ronnie go on for such a long time about his PC because I'm fascinated by the point in life that he is. I should have stopped him earlier so that he could get to his question. But Shiroyasha, go on. Hey Vimoh. Hey, what's up? Yeah, I'm good. Hope you're doing well too. I'm okay. Already overtime हो गया है. So नहीं I'll नहीं keep चलेगा, it बताओ. short. You have I mean, 5 minutes. I always get 5 minutes only. So बहुत ही मतलब I don't know even how to put it, but मतलब I feel कि आपका जो current standing है that goes मतलब yes, you are an atheist, so you're equally opposed to all religions, right? But Hmm. मुझे ऐसा लगता है due to the current political scenario, you are very anti-right wing, the Hmm. Hindutva movement, Hmm. कह लो उसको या कुछ भी कह लो, as opposed to when someone brings up कि मतलब ये bigotry तो left wing से भी आती है या Hmm. pro Islamic या pro Hmm. Christian लोगों से भी ये चीजें past में हो चुकी हैं. मतलब I Hmm. feel हिंदुत्व विंग तो पास्ट में अभी क्यों अब भी हो रही है? अभी भी हो रही है. exactly There are really exactly. vile perspectives on the left. There are Hmm. really vile perspectives coming from Islamic quarters and Christian quarters even today. The reason I talk mostly about the right wing toxicity is because the right wing is more powerful right now. I have talked so many times about power structures. I don't think I need to repeat it. You already know the reason behind it. करेक्ट नहीं तो उससे मेरा जो दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा था बट आई फील कि ये राइट विंग इतना स्ट्रांगली लोगों को शायद क्यों इन्फ्लुएंस कर पा रहा है इज बिकॉज इसके पहले लोगों ने काफी ज्यादा बिगेटरी देखी है फ्रॉम द लेफ्ट या प्रो No, it इस्लामिक no. या So कुछ भी. I disagree with that. I think हाँ आई this वांटेड टू always हियर योर. happens. No, I think this happens in any society where any ideology is powerful. Right now in America, there are people who are like white people khatre mein hai, and you say that it's because of inherent white supremacism or racism, etc. They say, yeah, but that's only because these woke people are being so anti-white right now. Every category that is powerful tries to justify its bigotry and toxicity by blaming the people who are less powerful and victims of their bigotry. नो So नो आई ये एम नॉट होता है टॉकिंग बहुत. अबाउट द आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर प्रोपोगेटिंग द आइडियोलॉजी. मैं अब बात कर रहा हूँ जनरल पब्लिक की कि व्हाई पीपल सीम सो फैसिनेटेड बाय राइट विंग राइट नाउ इज बिकॉज Hmm. उन्होंने लेफ्ट विंग को इतने सालों से देख लिया है और वो Okay. फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. आई एम नॉट सेइंग राइट विंग इज No, करेक्ट. I don't think that is the case. नहीं आई फील दैट टू बी अ स्ट्रांग रीजन व्हाई बिकॉज अभी हाँ, राइट विंग पर ने क्या किया है Hiroyasha, कि when you say that you're talking about the general public, you're not really talking about the general public, are you? You're talking about जनरल right पब्लिक wingers. मतलब You're talking हाँ about मतलब Hindu नहीं upper caste यू नो right व्हाट आई wingers. सी जो जो लोग पहले काइंड ऑफ न्यूट्रल भी थे ना अब वो लोग Hmm. भी बहुत ज्यादा अपने आप को प्रो राइट विंग दिखाने की कोशिश करते हैं वो न्यूट्रल नहीं या थे, वो oblivious थे. उसको न्यूट्रलिटी नहीं कहते. ऑब्लिवियस अगर कह लो अगर या मैं अगर मैं अपने कास्ट प्रिविलेज और रिलीजियस प्रिविलेज के प्रति ऑब्लिवियस हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं न्यूट्रल हूँ. उसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं मज़े से मलाई खा रहा हूँ, इस बारे में सोचे बिना कि मलाई कहाँ से आ रही है. कल को जिन लोगों की तरफ से वो मलाई आ रही है, वो बोलेंगे कि ये मलाई हमारी है यार, तो तुम जाग जाओगे, तुम्हारे अंदर का हिंदू जाग उठेगा एंड मतलब तुम नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके अंदर का हिंदू जाग उठेगा और बोलेंगे नहीं, नहीं ये सब सही नहीं है, फिर दे विल रीड लिटरेचर ऑनलाइन अबाउट हाउ कांग्रेस डिड दिस और लेफ्टिस्ट डिड दैट एंड दे विल ट्राई टू फाइंड जस्टिफिकेशंस फॉर इट। बट दोज़ आर जस्टिफिकेशंस, दोज़ आर नॉट रीजंस। द रीजन इज़ ओनली पावर। द रीजन इज़ ओनली दैट a majoritarian community
is happy with the status quo, and when anything happens from the non-majoritarian side that challenges the status quo, the majoritarian community starts blaming the minorities and the marginalized. नहीं, so I'll be very blunt about this. मतलब मैं इसको Okay. बिल्कुल ही मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली बात पे अब मैं आना चाह रहा हूँ कि why people are openly speaking. पहले भी मन प्रेजुडिस रहा होगा पर दबे उसमें रहा होगा, लेकिन अब तो लोग खुल के बोल रहे हैं बिकॉज उनके लीडर्स इस चीज को खुल के बोल रहे हैं. ठीक है, हम्म. मतलब अली वर्सेस बजरंग बली पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं. बट व्हाट आई फील इज कि शायद चाहे थे. कहीं ना कहीं, हाँ, if you see the history of the Abrahamic religions, don't you feel कि मतलब उनका हमेशा से जो नेचर रहा है हम्म. कॉन्क्वेस्ट का, या हम्म. काफी वो लोग रेडिकल रहे हैं. आई डोंट थिंक हिंदूज उस लेवल पे रेडिकल थे. इनफैक्ट Do वी you वर not think अंडर that? द मुगल एम्पायर. See, you're calling them radical. I agree that they were radical. And I will be the last person to say that any religion is not radical with respect to in groups and out groups. But do you think that the same definition will be extended by you towards a religion which has discriminated against its own people on the Definitely, basis of definitely. caste? Why do you No, no, think but that right now that I is am talking radical but about this is not? नो, आई एम सेइंग ये तो रेडिकल है ही, बट व्हाट आई एम Hmm. सेइंग इज अभी वो कास्ट वाली बात तो चलो है ही, बट Hmm. राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द पोलराइजेशन बिटवीन टू रिलीजन्स. तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब तुम इन चीजों में ना पढ़ो, बिकॉज वो फिर इस चीज का हवाला देते हैं कि देखो इतने सालों से तो यही लोगों का रेडिकलाइजेशन रहता है, या फिर सेक्युलरिज्म इज ओनली फॉर हिंदूज, बिकॉज एक बार को हम मतलब हिंदूज को ऐसा लगता है कि दे आर मोर एक्सेप्टिंग टू चेंज Yeah, एज but कंपेयर टू that is a manufactured pain point, isn't it? ऐसा तो कभी भी नहीं था कि इंडिया में हिंदुओं को हिंदू होने की इजाजत नहीं है. That is नहीं 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 completely नहीं made up. नहीं नहीं Completely made up. व्हाट दे फील इज अगर कोई इब्राहिमिक रिलीजन कोई डिमांड रखता है तो दैट Hmm. इज नॉन नेगोशिएबल. बट अगर Hmm. वही चीज हिंदू रिलीजन के बारे में कोई कानून बनता है, लॉ होता है, दैट इज I काइंड ऑफ understand that they नेगोशिएबल. feel like this, but do you think it is true? आई डू सिंपैथाइज विद देम. मुझे लगता है ऐसा डेफिनेटली The होता reason तो you है. sympathize, let me ask you this: is the reason you sympathize with them? Are you Hindu? बाय बर्थ, बट वैसे तो एग्नोस्टिक एथिस्ट जो आपका नहीं, ट्रैक है वैसे वही. वो तो इतना आसानी से छूटता नहीं है ना. अभी मैं भी एथिस्ट हूँ. बाय आई वाज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, पर मैंने आदि पुरुष देखा, एंड आई एम द गाय हु क्राइज ड्यूरिंग द सीन व्हेन राम लीव्स अयोध्या. सो इतनी आसानी से छूटता नहीं है. आई नहीं थिंक नहीं नहीं नहीं. I I'll- think we need to be aware of our biases with respect to the नहीं, this thing popular I can talking guarantee you points I'm that are not prevalent biased in at our all. society. नहीं नहीं, आई एम एग्नोस्टिक एथिस्ट, मतलब ये मेरा वो क्लियर कट है. आदि पुरुष तो मैंने भी देखा, मतलब मैं तो सिर्फ वो जब मैंने सुना ना टपोरी डायलॉग डाले, मैं तो वो देखने गया था कि मतलब कुछ कॉमेडी वॉमेडी हो जाए, पर कॉमेडी भी नहीं, और सर पकड़ के वापस आया हूँ. Hmm. दिस वाज सच अ डिजास्टर. बट हाँ, रिगार्डलेस, नहीं मतलब आई फील लाइक दैट कि मतलब सीधा सर तन से जुदा और ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं इफ यू से एनीथिंग अबाउट देयर. मतलब मुझे लगता है उनके रिलीजन ही बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड Shirayasha, हो गया Shirayasha, है. I agree. I already told you. I agree that there are plenty of toxic points in Abrahamic religions. I'm just wondering why you think that that same courtesy is not going to be extended to the religion you and I belong to. नहीं, डेफिनेटली अगर यही पॉलिटिकल क्लाइमेट नहीं, दैट्स व्हाट हिंदूज वही बनना चाह रहे हैं. दैट्स द होल हिंदुत्व जो मूवमेंट मुझे लग रहा है वही है कि मतलब उनको भी उनकी तरह ही बनना है. एंड आई एम लाइक क्यों तुम्हें बनना है, मतलब ऐसा. बट दे आर लाइक क्यों, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम तो सेल्फ डिफेंस में, तो हमको तो कुछ करना ही हाँ, so पड़ेगा. that is not the reason. It's a justification. That's what करेक्ट, I've been करेक्ट. trying to tell you. The नहीं, बट व्हाट आई reason फील इज Hindus मतलब ये कर रहे हैं is because of the fact that they can and that they are majoritarian. The political party that is being represented, that is the representative of this ideology right now, is not doing it because of certain things that happened. They're using it as a justification, but it's not the reason. The reason is simply power, and we have seen this happen over and over all over the world in different scenarios. यहाँ पे हिंदूज हैं और नॉन हिंदूज हैं, पर किसी और देश में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स होंगे, किसी और देश में क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस होंगे. इट हैज़ गॉट टू डू विथ हाउ मच पावर अ कम्युनिटी हैज़, एंड हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ the properties of the religion. I mean, it's got mostly nothing to do with the properties of the religion. कूल. नहीं तो टू समराइज इट, मतलब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हिंदू क्या करे, कौन मुस्लिम क्या करे, मतलब मेरा कोई बायस नहीं है. I'm बट sure you व्हाट think so. I'm sure you नहीं think so नहीं, कि आपको फर्क नहीं पड़ता. अरे नहीं पड़ता भी हूँ सही में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मतलब पर मतलब मेरा पॉइंट ये कि व्हाट आई फील द
टोन है जो अभी करंट राइट विंगर्स का आता है, वो ये आता है कि मतलब जब भी लेफ्ट की जो लीनिंग है या कोई भी इस्लामिक है, वो हिंदूज को हमेशा अगर ऐसा दिखा रहा है कि बहुत मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो वाई तो हाउ कैन दे जस्टिफाई कि इंडिया में विच इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, और शायद इंडिया ही है अभी, वहां पे मुस्लिम्स का पॉपुलेशन आई थिंक बड़ा ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। बट देश है कि जब तुम देख लो कोई भी वर्ल्ड है, कोई भी कंट्री है, वहां पे अगर कहीं पे भी इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे हिंदूज के साथ बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, परसिक्यूशन ही हुआ है, पॉपुलेशन खत्म हो गया है, ये हो गया है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आई फील इट बट हैज यू सम कैन गिव बेसिस। दैट एग्जांपल. लिसन, पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम्स आर मुस्लिम्स, राइट? हम्म। और उनके साथ भी बुरा होता है. It's got नहीं nothing नहीं, to do with the वही religion. It's got वही to do with the दिक्कत है ना, fact that the people who यही तो हर hate किसी them की are यही तो हर powerful किसी and की more in बिगड़ती है, number. यही तो हर किसी की बिगड़ रही है, कोई अपने रिलीजन के अंदर झांक के दिखना नहीं चाहता। बट आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट रिलीजन वर्सेस रिलीजन, नॉट I'm कास्ट। not. See, here's the thing. You are bringing up a point about violence in society. You are saying it is because of respective properties of religions. That is what I'm disagreeing with. I'm saying it is about power. It is about नहीं, दैट इज majority. It is आई about टोटली political एग्री power. विद, No, you टोटली एग्री don't विद। agree with me. Why are you saying you agree with me? You've been saying the नहीं exact नहीं, opposite मतलब of this statement. ये बात उनको समझ में नहीं आती है ना, जो जो हिंदूज आजकल बट यू जो ऑल्सो बह रहे सेड हैं। दिस दैट यू एग्री विद देम. नहीं, अब मैं बोल थोड़ी रहा देर हूँ, पहले मैंने पूछा था, दिस इज व्हाट थोड़ी आई देर वाज। पहले लिसन लिसन थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि ये लोग ये कारण देते हैं, बट डू यू अग्री विद देम? एंड यू सेड यू डू अग्री विद देम. नहीं, एग्री विद ऑन व्हिच पॉइंट? That it is because lefts and marginalized communities have been very mollycoddled for quite some time. You agree with them when they tell you that the reason they're being violent is because other people are not held to the same standards as them. You agree नहीं with them. नहीं, आई एम नॉट अग्रीइंग विद देम, आई एम सेइंग उनका यही सेंटीमेंट निकल के आता है। आई एम ट्राइंग टू मैं थोड़ी देर पहले तुमसे एक्ट एज पूछा अ, था कि they will say नहीं this, I know this, but do you agree with them? And you said that you kind of do. नहीं, Are फिर you वो saying that you don't? नो नो आई डोंट। Okay, मतलब दो cool. आप द फैक्ट दैट यू आर सेइंग, मतलब मैं उस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर रिलीजन को मैं हटा दूं इक्वेशन से, इंसान की फितरत में है डिस्क्रिमिनेशन करना, वो कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल ही लेगा। दिस इज व्हाट Yeah, आई वो स्टैंड पॉइंट फॉर। पता है, वो पॉइंट आई एग्री विथ यू, राइट? बट आई थिंक ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ लार्जली ए यूजलेस पॉइंट. हम लोग ये ह्यूमन नेचर को जो ब्लेम देते हैं ना, इट डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. व्हाई डज रेप हैपन? ह्यूमन नेचर. व्हाई डज मर्डर हैपन? ह्यूमन नेचर. व्हाई डज कास्टिज्म हैपन? ह्यूमन नेचर. इट नाइदर सॉल्व्स द प्रॉब्लम nor does it tell me anything useful नो नो, about तो the problem मतलब वो हर itself. चीज पे अप्लाई हो जाएगा ना। सो सी, हाँ, मतलब it's व्हाट आई एम very सेइंग इज general, अभी, it doesn't matter. नो नो, सो जैसे अभी बात हिंदू वर्सेस मुस्लिम की हो रही थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू कास्ट। बट आई हम्म. एग्री विद योर पॉइंट कि अगर मान लो मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हटा दूं, हम्म. डिस्क्रिमिनेशन विद इन कास्ट विल स्टिल एग्जिस्ट। Yeah. और अगर मैं कास्ट को हटा दूं तो कुछ ना कुछ और हम ले ही आएंगे। Yeah, it's always going to be about who has more power and who has less power, and the people who have more power will always refuse to make allowances for the existence of those with less power. तो वही है, मतलब तो Right now, Hindutva has व्हेन आई more ट्राई power टू, and others don't. If, by the करेक्ट way, करेक्ट। if this was flipped and we lived in a country where Islamic majority was there and all the things that people are imagining right now were actually happening, I would totally be right here. My problem is not with any particular group. My problem is with the misuse of power that the group has because it is large in numbers. हाँ ओके, Cool. बट वही है, मतलब Yasha, इफ can I वी move वर, on to the next caller? There are श्योर still three people left. श्योर श्योर श्योर, थैंक्स। चलो, bye bye. ये शिरो अशोक को क्या हो गया? कोई रैबिट होल के अंदर चले गया लगता है. नेक्स्ट इज अभिषेक, कनेक्टिंग आर्टिस्ट. हाय अभिषेक. अभिषेक आपका वेबकैम ऑन हो गया शायद. वेट, हाँ, यू आर स्टिल म्यूटेड. Hi, Vimoh. How are you? हाय. गुड गुड. व्हाट्स अप? All good. बस मेरा अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं बहुत आखिरी में आया हूँ, तो मेरे पास समय बहुत कम है, तो हाँ, 5 मिनट, मैं 5 मिनट यार, 5 मिनट से ज़्यादा मत लेना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ठीक एक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको लगेगा कि उसके लिए टाइम बहुत कम लगेगा तब आप आंसर कर देना, नहीं तो मैं दूसरे क्वेश्चन चले जाऊंगा। ठीक है, ठीक बहुत है. शॉर्ट क्वेश्चन है वो। तो हाँ, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर बेटर लैक ऑफ बेटर वर्ड, गॉड सेव मी, क्वेश्चन शॉर्ट करने के लिए मैं ये बोल रहा था कि जैसे मेरा ये हाइपोथेसिस है, कह लीजिए कि जो लोग रिलीजियस रहते हैं या जो फर्म बिलीवर्स रहते हैं रिलीजन में, उनके पास एक एडवांटेज मेरे ख्याल से ये है कि
वो क्योंकि वो अपने जो मॉरल वैल्यूज हैं उसको वो डिवाइन बना देते हैं, मतलब डिविनिटी तक पहुंचा देते हैं। जैसे एक मैक्स शीलर करके फिलोसोफर था, उसने कहा था कि हम्म हमारी हायरार्की ऑफ वैल्यूज होती है, और हम्म जो हमारी टॉप पे है, उस हायरार्की जो टॉप पे वैल्यू रहती है वो हम काइंड ऑफ नॉन नेगोशिएबल रहती है हमारे लिए। तो और वो चीज तब तक काम आती है जब व्हेन डूइंग द राइट थिंग इज हार्ड, व्हेन इट इज टफ, जब आप एक ऐसे टाइम पे जब वो टफ है मॉरल चॉइस लेना, एथिकल चॉइस लेना, कोट अनकोट। हम्म तो ये आपको लगता है जो फर्म बिलीवर रिलीजन में, उसके लिए ये चीज कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। हम जैसे मतलब जो एथीस्ट है, जो नॉन बिलीवर्स है, या फिर जो एग्नोस्टिक्स है, उनके पास एक ऐसा कोड नहीं है जो इमोशनली बैक कर सके। जैसे आपने स्टोरी की बात की थोड़ी देर पहले, कि एक जो स्टोरीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो रिलीजन का हम्म एक कारण ऑपरेट करने का, आगे बढ़ने का एक भी है कि बहुत इफेक्टिव मैं स्टोरी एक्चुअली रही है इस वो। चीज को लेके इतना कन्विंस नहीं हूँ. आई डोंट थिंक इट इज easier for religious people. We have gotten into the habit of saying that it is easy for them, but I don't think there is जी any practical utility to religion as far as making moral decisions are concerned. Because मैंने एथीस्ट को जिन डायलेमा से गुजरते हुए देखा है, मैंने रिलीजियस लोगों को भी उन्हीं डायलेमा से गुजरते हुए देखा है. करूँ या ना करूँ. अब हाँ, ये होता है कि बात करते समय एथीस्ट कि भगवान क्या करूँ पूछ नहीं सकता या पूछता नहीं है, और वो लोग पूछ लेते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि कोई जवाब मिलता है. दिस इज लाइक दैट थिंग, लाइक पीपल से कि जब प्लेन क्रैश हो रहा होता है तो कोई एथीस्ट नहीं होता, राइट? लोग कहते हैं कि ज- जब प्लेन क्रैश हो रहा था तो सब भगवान को बुलाते हैं. क्वेश्चन है, क्या कोई फायदा होता है क्या? जब जी धार्मिक व्यक्ति प्लेन क्रैश के अंदर बैठ के भगवान को बुलाता है, तो क्या प्लेन क्रैश होना बंद हो जाता है? नहीं होता. मैं बिल्कुल नहीं, इट्स बिल्कुल मैं जस्ट अग्री इट्स करता हूँ जस्ट आपकी बात इट्स जस्ट अ थिंग से। पीपल से, बट देयर इज नो रीजन मैं टू थिंक इट इज ट्रू. मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि जो हायरार्की ऑफ वैल्यूज में वो जो, जैसे आप देखोगे हमारे जितने भी डीटीज हैं, सो जो जितने भी डीटीज हमारे, दे वी हैव असर्टेन सम क्वालिटीज टू देम, पर्टिकुलर क्वालिटी है हर उसकी। क्योंकि मैं हम्म जो जितना हद तक मैं देख पाया हूँ, साइकोलॉजी में भी बोलते हैं कि जो आप आइडलाइज उन चीजों करते हो जो आपके अंदर लैकिंग, आपको लगता है कि अंदर लैकिंग है, तो आप उसको आइडलाइज करते हो मिमिक करने के लिए उस चीजों को। तो हम्म रिलीजन के पास एक बहुत अच्छी स्टोरी बन जाती है उस चीज को, मतलब डिविनिटी तक पहुंचाने के लिए। मतलब आपके माइंड में वो डिवाइन है, तो आप उसको हम्म आइडलाइज करते हो उस वैल्यू को, तो उस वैल्यू के प्रति आपकी जो इमोशनल बैकिंग है, पता नहीं मैं ढंग से बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा नहीं नहीं, समझ रहा हूँ, हूँ, मैं समझ रहा हूँ. हाँ. वो मतलब वो उसके लिए बहुत स्ट्रांग है वो बैकिंग, इमोशनल बैकिंग। जैसे कि आप जानते हो, हम्म जैसे आप थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि जिस चीज के प्रति आपकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप उसके प्रति ऑटोमेटिकली उसके अच्छे से वो बन जाओगे, मतलब हम्म फॉलोअर बन जाओगे, उस वैल्यू के फॉलोअर बन जाओगे, नॉट या डीटी तो और फॉलोअर बनोगे नॉट, या तो अपोजर या बनोगे. तो मैक्सिमम मैं उसको हाँ. डायमेट्रिकली अपोजिट साइड भी है जो नेगेटिव है बहुत, आई एग्री। हम्म तो मैं हम्म आपको लगता नहीं कि ये चीज हमको एथिस्ट या नॉन बिलीवर्स को ये चाहिए, ऐसा कुछ मॉरल, मतलब कैसे बोलूं, मैं को एक वर्ड नहीं आ रहा है मेरे लिए, मतलब एक कोड, हम्म एक स्टोरी, एक जैसे जो नॉट एग्जैक्टली डिवाइन बट क्लोज टू दैट और सिनोनिमस टू दैट, जो हमको हम्म हेल्प करे व्हेन डूइंग द राइट थिंग इज वेरी हार्ड। ये मेरा क्वेश्चन। हम्म ओके, आपको ऐसा डिलेमा, आप क्या कहना चाहोगे इसमें, आपको पर्सपेक्टिव जानना था। मैंने बोल दिया बस जो बोलना था. इसके ऊपर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है. People look for answers in some kind of moral framework, जी but there is no reason to think that the religious moral framework is any more powerful than whatever atheists do. सब लोग एक ही चीज़ करते हैं जब मुश्किल में होते हैं. लोगों के काम में एक ही चीज़ आती है, और वह है उनके आसपास वाले लोग, या तो उनका खुद का मेंटल स्ट्रेंथ, एंड दैट्स इट. जी रिलीजन से कुछ खास जैसे फायदा होता नहीं. ओके, जैसे जॉश ग्रीन करके हार्वर्ड में जो प्रोफेसर है, उन्होंने जब टेस्ट हम्म किया तो उन्होंने बताया कि इसमें वो ही चीज काम आती है जो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक है। क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा, मतलब अगर कोई चीज आपके लिए बहुत हार्ड है, उस समय हम्म आपका जो रैशनल ब्रेन है या विल पावर है, उससे ज्यादा काम आता है वो चीज आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टेम्पटिंग। इफ यू वांट टू अवॉइड अ टेम्पटेशन, द बेस्ट वे टू अवॉइड इट इज इट शुड नॉट बी टेम्पटिंग। वो सबसे ज्यादा अच्छा ओके. रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट देता है। और जो, हम्म जैसे आप बोलोगे कि बंदा, आपको बस चीटिंग का ऑप्शन था, फिर भी आपने चीटिंग नहीं किया, तो जो हम्म आपने जो लोग चीटिंग नहीं करते हैं ऑप्शन मिलने के बाद भी, तो वो उनका ऐसा नहीं रहता कि बहुत मतलब स्ट्रगल करा था, करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं। मैक्सिमम टाइम ये रहता है कि दे जस्ट डू इट आउट ऑफ ग्रेस, कि बस नहीं करना चाहिए। वो उनके लिए इतना हम्म सिंपल रहता है, वो उतना ऑब्वियस रहता है। हम्म तो ये एक हम्म इमोशनल बैकिंग वाला काम हो गया ना। तो मैं ये बस बोल रहा था, मेरा पॉइंट, आपका पॉइंट अच्छा. मैं समझ गया क्या बोल रहे हो, कि सब वही है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि आप साइंस फिक्शन इंडिया की पढ़ते हो, आप तो हाँ. ऑब्वियसली आप राइटिंग करते हो। तो मैंने एक समसारा करके एक साइंस फिक्शन अभी भी 2000 शायद लॉकडाउन में ही आई थी, आपने पढ़ी है क्या वो? किसने लिखी समसारा थी? करके राजेश, आई एम फॉरगेटिंग नेम, बट राजेश करके कोई है, यहाँ बहुत यंग है, उसने लिखी है, बहुत मेरे को काफी मतलब फैसिनेटिंग ये लगी वो। और प्रिंट बुक किसने पब्लिश की बुक है? है, बुक है, बुक है, बुक है, बुक है।
किसने पब्लिश किया? पब्लिशर कौन है? एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। और एक और एलियंस इन दिल्ली करके आई है, वो कोई बहुत अच्छी लगी, वो मतलब काफी अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। I'll look up these books, but अगर पब्लिशर का नाम बता दे तो पता चलता, but I'll look up these books. ओके, I और एक मैं haven't read. ओके 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 और एक मैं बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, फैक्टफुलनेस, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो। कौन सा? फैक्टफुलनेस, हैंस रोजलिंग की। Factfulness. Okay, cool. वो बहुत शानदार किताब है, मेरे को अच्छी लगी तो मैं सोचा रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू विमो। ठीक है, चलो, thank you. Bye bye. बाय बाय। That was Abhishek. I have Arun Dantuluri next. Hi, Arun. Hey, What's up? uh, thing just I wasn't present for the entirety of like last week's stream, so like I want to talk about the reaction to Adipurush, if you will, if that's okay. Sure. Go on. So basically, like I think you touched upon this as well, but like I want to go more into detail about it. So basically, what we have is people who claim to be sort of liberal. They Mhm. claim to be liberal, and these people. I'm not surprised that the right wing, some quarters of the right wing are advocating for a boycott of this movie. But Mhm. like the fact that even liberals are doing it is honestly kind of it. It's kind of taken me by surprise, Yeah. and Yeah, and I think you uh, listened to this part of my conversation last week. I mean, I mean, it was, it did catch me off guard. Like, I've gone on to Reddit and to just like look at opinions of the movies, and like even like more relatively liberal subreddits are saying, "Hey, dude, I mean, I don't support the boycott movement, but I think this film kind of deserves it," Yeah. and that sort of It's yeah. very it's very curious, no? Everyone will be saying कि free speech free speech होना चाहिए until it comes to a thing that they don't agree with, and then they're like, yeah, I don't support bans, but इस चीज को ban होना चाहिए. It's very convenient, and I don't like it. Among liberals, I don't like it. I mean, like, uh, even if it's like the worst movie ever made, like Hmm. if it's something like The Room by Yeah. even that shouldn't be banned, let alone something as forgettable as this movie. Hmm. It's so I I think don't even get. if someone has made the worst movie ever made, that's an addition to culture, right? Yeah. Yeah, The Room is an addition to culture. There are watch parties organized all over the world where people just watch the movie and laugh. Yeah. Yeah. Well, yeah, like see that actually has some kind of impact on the people watching it. Something like Adipurush, which like okay, fine, it's not fair for me to judge because I haven't seen it, but people are saying it's forgettable. Even then, I don't think you should advocate for a ban, because if it starts with that, where does it stop? The next minute, someone's just you could start advocating for retellings of these epics or whatnot, and like it's, I mean, it's not something new for these Hindutva quarters, but I don't understand why liberals are doing it. Because they're not free from the biases that their religions have imposed on them. Like अभी थोड़ी देर पहले मैं श्रेयाशा से बात कर रहा था. I think even among people who consider themselves, I don't want my country to run by my religious values, the biases that are ingrained into us at a young age with respect to our religion are hard to escape. And अगर कोई atheist है, like it's hard for atheists to escape. Liberals तो फिर भी atheist, there are many liberals who are not atheist, but there are atheists who will be like, नहीं नहीं, I'm a Hindu atheist. Religious indoctrination happens at such a young age that it becomes really hard to let go of all the biases that it imposes on us. And the in moments of in delicate moments,
in moments of uh, when there is fear and anger going around, tribalism kicks in and people will automatically snap back to their religious identity. Even I am not completely free from it, I'll admit. Mm, I mean, even if you had like the flicker, like if even if you had like the thought in your head, you wouldn't go so far as to like actually like speak it out and impose for something to not someone to not express their thought because it quote unquote hurts your feelings, right? Yeah. I mean I don't think that's excusable. Yeah, that's true. Yeah, so I guess that's all I wanted to say. Okay, Shirvasha is saying Vimo is considering me biased. No, no, I'm not. I think we had a conversation and you made very clear that you don't agree with those people. Maybe in the earlier part of our conversation, I made the mistake of thinking that you were biased. And Arja, I think here mentions a very important point. Left wing also use right wing methods. The best example is communist groups of China. That was my point. It is not about left wing methods or right wing methods. It's about who is powerful. In a society where the left is powerful, they'll do the exact same thing. In a society where the right is powerful, they'll do the exact same thing. It is about pandering to majoritarian communities and considering them victims of people who don't belong to majoritarian communities. It is not anything to do with ideology or religion. It's only about power. Not only about power, it is mostly about power. But thank you, Arun. Thank you for joining. I'll move on to the next caller. Yeah, sure. Thanks. Bye bye. That was Arjun. Sorry, I'm in a hurry. The last caller is, oh, sorry, that was Arun. The last caller is Arjun. Hi, Arjun. हाँ नमस्ते आपको। Namaste. हाँ हाँ, आदि पुरुष फिल्म देखी तो हाँ. हाँ वही आप देखिए, फिल्म तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, पसंद तो आना दूर की बात है, टपोरी फिल्म बना दी इन्होंने। लेकिन हाँ. एक हाँ लेकिन एक यहाँ पर एक मैं खुश हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सिखाने की। मैंने कोशिश की अपने स्तर पे और आज मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हमारे देश में बैन लग सकता है। उस पर इनकम टैक्स रेट पड़ी उसके बाद में। नेहा सिंह राठौड़ ने बिहार में एक गाना लिखा था यूपी में काबा, तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पुलिस बिहार भेज दी। हाँ, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई थी आई थिंक। परेशान किया उन्हें। हाँ। भीड़ एक फिल्म आई थी, कोरोना पर फिल्म आई थी भीड़, तो उस पर चर्चा जारी निकालने पड़ गए थे। हाँ क्या, लेकिन आदि पुरुष के साथ ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी। ये मैंने यही सिखाने की कोशिश की कि आज बीजेपी के लोग कुछ बोलेंगे नहीं। आज वो जैसे बजरंग दल जो है उसको बैन किया गया था, तो बजरंग बली को लेकर आ गए थे, लेकिन आज तो बजरंग बली का ही अपमान किया गया है लिटरली। लेकिन इस पर कुछ होगा नहीं। इससे ज्यादा बड़ा लेसन ये जो लोग लेफ्ट या लिबरल हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन नहीं है। उनको पता था ये होने वाला है। ये बड़ा लेसन उनके लिए है जिनको लगता था, जैसे मनोज मुंतशिर जैसे लोग, जिनको लगता था कि वो एक ऑथोरिटेरियन सरकार को सपोर्ट करेंगे तो लोग उनकी फिल्मों के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। तुम अगर बकवास फिल्म बनाओगे तो लोग बकवास बोलेंगे, और अगर तुम एक ऐसी कल्चर को एनकरेज करोगे जहां गाली गलौज, घटिया भाषा का प्रयोग, अब्यूज, मिसोजिनी, कास्टिज्म और 50 प्रकार की प्रॉब्लम्स, ये सब तुम नॉर्मलाइज कर दोगे, सोसाइटी में हर कोई करेगा। घर के बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, स्कूलों में हो रहा है, कॉलेजेस में हो रहा है, सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, चुनावी स्पीचेस में हो रहा है। अगर तुम इस चीज को नॉर्मल बना दोगे ना, तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर तुम्हारे देवताओं के मुंह से ये भाषा निकलने लगेगी। ये वार्निंग उन लोगों के लिए है। ये है कि अगर तुम समाज में कचरा फैलाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे देवताओं के मुंह से वो कचरा निकलेगा। और यही हुआ आदि पुरुष में। लोगों को कितना बुरा लगा हनुमान के वो डायलॉग सुन के। क्यों लगा? ये डायलॉग आए कहां से? ये वही डायलॉग है जिनको नॉर्मलाइज किया गया है पिछले कई महीनों में और सालों में। ये तो होना ही था। हाँ, वो तो गाने तो बने ही है, बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं कि हिंदू का है हिंदुस्तान, और फिर आगे के गाने मैं भेजूंगा। हाँ। मैं यहाँ बोल नहीं सकता, नहीं, यहाँ मत भेजो, यहाँ मत भेजो मुझे। यार मेरा चैनल डिमोनेटाइज करवाओगे तुम। अरे नहीं, मतलब उनको देखना, मतलब ऐसे ही मैं लिख दूंगा अगर प्राइवेट में कहीं पर कमेंट में
तो नहीं कमेंट में मत लिखना, इंस्टाग्राम पे भेजना प्राइवेट मैसेज, मैं कमेंट में उनको एनकरेज नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो मोदी जी के भक्त है, वो कभी सवाल नहीं पूछ रहे, वो भी अभी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आदि पुरुष पर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बैन तो नहीं करना चाहिए फिल्म को, मैं तो बिल्कुल अपोज हूँ कि बैन नहीं करना चाहिए। आई एग्री बैन होगा भी, दो चीजें हैं, बैन नहीं करना चाहिए और बैन होगा भी नहीं। लेकिन एक सवाल हमें सबको पूछना चाहिए कि बैन क्यों नहीं होगा? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हो जाएगी, लेकिन ये फिल्म क्यों नहीं बैन होगी? जो तुम एंटी हिंदू, तुम ही कह रहे हो, हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं, आप ही कह रहे हो कि ये फिल्म सबसे बड़ी एंटी हिंदू फिल्म है, तो फिर इस पर बैन क्यों नहीं होगा? इस पर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। नहीं बोल तो रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं, राइट से, लेफ्ट से, सेंटर से, कम्युनिस्ट से, एथिस्ट से, सबसे गालियां पड़ चुकी है इस पिक्चर को, सब लोग बोल रहे हैं। हाँ वो तो है, वो तो मैंने देखा है, लेकिन बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है जो आशीर्वाद दे रहे थे फिल्म को, और वो कुछ बोल नहीं रहे। मैंने अभी देखा योगी आदित्यनाथ का कोई कमेंट नहीं आया, बैन लगाने के लिए उनको पत्र लिखा जा रहा है, योगी लेकिन आदित्यनाथ बैन का तो महीनों से किसी भी चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं आया। हाँ आखिरी बार किस चीज पे कमेंट आया था? आई थिंक ही इज काइंड ऑफ लाइंग लो। चुनावी साल है शायद, आई डोंट नो बीजेपी के अंदर का कुछ चल रहा है, पर आई हैव नॉट हर्ड एनी कमेंट फ्रॉम एन ऑन एनीथिंग फॉर सेवरल मंथ्स नाउ। हाँ ये भी कारण हो सकता है, पर अब वो वाला एक्शन नहीं लिया जाएगा जो बीबीसी पर लिया गया था। और यही मैंने उनको सिखाने की कोशिश की, मैंने अपने स्तर पे उनको बोलने का कहा कि आप पहली चीज तो ये देखो कि आप लोग सवाल नहीं करोगे, आप लोग उनसे सवाल नहीं करोगे, ठीक है? बीजेपी के जो लोग हैं जो इसको आशीर्वाद दे रहे थे फिल्म को, उनसे सवाल नहीं करोगे कि सबसे बड़ी एंटी हिंदू फिल्म बनाई गई है। और दूसरी चीज है कि ये लोग उनसे Listen, I हाँ don't want to call it an anti-Hindu film. I would happily call it a stupid film, but I don't want to call it an anti-Hindu film. हाँ मतलब उनके हिसाब से वो लोग तो, क्योंकि अब देखिए देखिए टपोरी डायलॉग बुलवाना, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा कर दिया, बाकी सब तो ठीक है। और ऊपर से मुस्लिम लुक दिया, वो तो ये लोग, ये तो इनकी खासियत है कि हिंदू कैरेक्टर्स को भी मुस्लिम लुक दे देते हैं। तानाजी में भी मुस्लिम लुक दे दिया था उदयबान को। तो हाँ मतलब वो तो कर ही रहे थे, पहले तो क्या रहे, मुस्लिम लुक को कर ही रहे थे, डीमन की तरह उनको दिखाई रहे थे, वहां तक तो चलो एक पल को ठीक, लेकिन उसके बाद हिंदू कैरेक्टर्स को भी आपने मुस्लिम बना दिया। तो ये सब चीजें हुई। तो अब इसको कोई एंटी, देखिए एंटी राइट विंग एंटी लेफ्ट विंग ये कुछ नहीं है, जो भी सरकार में है और गलत काम कर रहा है उससे सवाल पूछेंगे कि आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन की, तो हमारा सवाल है, अब कोई भी है लेफ्ट विंग का भी करता है तो फिर उससे भी सवाल करेंगे। तो ये लेफ्ट विंग राइट विंग जो भी पावर में होगा उससे सवाल पूछे जाएंगे। अगर लेफ्ट पावर में आता है तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, अगर राइट पावर में आता है जैसा कि वो अभी है तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, सिंपल। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था अर्जुन, कि ये लास्ट पॉइंट। हाँ लास्ट पॉइंट। हाँ, रामायण के कई सारे रीटेलिंग की जो आप बात कर रहे थे स्टोरी की, तो रामायण तो 300 रामायण है और मुस्लिम की कई सारी रामायण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी रामायण है, विशाल रामायण, फिर मोपला रामायण है, मुस्लिम्स की कई सारी रामायण है। तो जो रीटेलिंग है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एथिस्ट भी, अब उसको राम से हमें वो नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप अपनी एक रामायण कर सकते हैं, आप अपना एक रीटेलिंग ऐसा बनाए, फिल्म ऐसी बनाए, फिल्म ही बनाए, और उसमें क्या रहे, एक अलग एथिस्टिक पर्सपेक्टिव से आप फिल्म बना सकते हैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर, जैसे ओएमजी फिल्म आई थी, ओ माय गॉड। हालांकि कुछ चीजें मुझे थोड़ी थी, हाँ मतलब उसमें जो कृष्ण का, मतलब उसमें काफी सारी चीजें माइथोलॉजी से जुड़ी हुई। हाँ, तो ऐसी स्टोरीज जिसमें गॉड्स हों। हाँ जैसे वो कृष्ण बाइक चला रहे थे, तो बाइक चला रहे थे तो उसके पीछे जो कांजी को बिठाया हुआ था, तो बिल्कुल वो अर्जुन वाला वो उस थीम से था कि अर्जुन को जैसे वो गाइड कर रहे वैसा है, उसमें भी दिखाया गया है फिल्म में। और फिर वो एकदम से उनको क्या रहे, वो भी दिखाते हैं अपना क्या रहे, असली रूप भी दिखाते हैं। इसको हम, जैसे हम इसको ईश्वर से जोड़ते हैं, पर ईश्वर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप होमो डियस दिखा सकते हो। एक कल्पना की जाती है कि इंसान इवॉल्व होकर के होमोसेपियन जैसे हम हैं, एक नई स्पीशीज जन्म ले लेगी जिसको होमो डियस कहा गया है, और डियस का मतलब गॉड होता है। तो होमो डियस यानी कि गॉड लाइक स्पीशीज होगी, जो गॉड का जो पावरफुल होगी, गॉड लाइक इंटेलिजेंट होगी, हमसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, हमसे पावर ज्यादा होगी, उसमें ये है, और वो टीच कर रही है होमोसेपियंस को, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये एथिस्टिक एक पर्सपेक्टिव हो गया है चीजों को।
हाँ ये मुश्किल है लेकिन मुश्किल है, ये प्लस काफी एक चीज ये भी है ना कि हम जो चीज इमेजिन करते हैं, वो हम भविष्य जब इमेजिन करते हैं, कई बार वो भविष्य के बारे में नहीं होता, वो वर्तमान के बारे में ही होता है। हम्म 1960s और 70s में जो साइंस फिक्शन स्टोरीज लिखी गई थी कि साल 2001 कैसा होगा, उसमें क्या था? उसमें था रोबोट्स, उसमें थे हम्म फ्री एनर्जी वगैरह, और उसका कारण ये था कि उस समय लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेबर एक प्रॉब्लम है और एनर्जी एक प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कर दिया जाएगा भविष्य में और हम सब यूटोपिया में रहेंगे। अभी जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमको सिर्फ डिस्टोपिया दिखते हैं, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं नज़र आ रही। उसी प्रकार ये जो होमो डेउस वाली परिकल्पना आपने बताई, इसका सबसे बड़ा फ्लॉ तो यही है कि इसमें लगता है कि हमें लगता है कि इंसान बदलेगा, पर इंसान रहेगा। हो सकता है हम्म इंसान रहे ही नहीं यार। हो सकता है पृथ्वी मज़े वाली फ़ेज़ में एंटर कर जाए, जहाँ पे इंसान हो ही नहीं, जहाँ पे बाकी सब जानवर मज़े से रहें और हम अपने आप को समाप्त कर लें। हम्म। हाँ वो तो एक अलग चीज है। मैं तो मतलब उसको माइथोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, एक फिक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें गॉड की जरूरत ही ना पड़े। हुँ। जैसे हम नहीं, मैं गॉड को समझ दिखाते रहा हैं। हूँ। मैं जस्ट अपना पॉइंट प्रेज़ेंट कर रहा था। हम्म। और एक चीज है कि जैसे बाकी जैसे जो महाभारत है जैसे उसमें कई सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है राजतंत्र की प्रॉब्लम कि हुँ, मतलब जो ओरिजिनल है उसमें राजतंत्र है, जबकि हुँ, हम जो है जानते हैं कि राजतंत्र अच्छा नहीं है, लोकतंत्र अच्छा है। हुँ। तो रिटेलिंग में आप लोकतंत्र के पर्सपेक्टिव से आप एक नई महाभारत बना सकते हैं। हालांकि महाभारत में भी कई जगहों पर गणतंत्र का एक वो आता है, भीष्म जब पितामह महाभारत उनको के बताते हैं। रिटेलिंग्स, महाभारत के कई रिटेलिंग्स हैं जिसमें जिनमें इन टॉपिक्स को हम्म शायद एक्सप्लोर किया गया होगा। हम्म, आपने ये देखी है जाने भी दो यारो? नहीं वो तो नहीं देखी। पिक्चर देख लो, अच्छी पिक्चर है, नसीरुद्दीन शाह वाली, बहुत पुरानी पिक्चर है। इट्स नॉट अ महाभारत रिटेलिंग, बट इट्स गॉट महाभारत इन इट। आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, बट अगर देख सकते हो तो देख लो, अच्छी पिक्चर है, जाने भी दो यारो। हम्म ठीक है, बस ठीक है। यही कि हाँ ठीक है, बस यही कहना चाह रहा था कि रिटेलिंग्स होनी चाहिए। और रिटेलिंग्स में एक यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हम लोग जो है रिटेलिंग्स की पावर को समझे। जय माँ संतोषी एक फिल्म आई थी, उसने नई गॉड को पैदा कर दिया, उसके मंदिर हम्म, बन गए। हम्म, संतोषी माँ जो कि है ही हम्म। नहीं, या उनके मंदिर बन गए, उनके ऊपर मिथ बन गए। कोई तो भी नहीं है यार। फिल्म की संतोषी पावर। संतोषी माता इज सिंपली अ गॉड दैट गॉट एडेड टू द हिंदू पैंथियन इन मॉडर्न टाइम्स। पर अगर आप हम्म। कहोगे कि वो है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि दूसरे थोड़ी हैं, कोई भी नहीं है। हाँ मतलब नहीं, मतलब वो कह रहे एपिक्स में नहीं है, वो शास्त्रों में नहीं है, ये कहना चाह रहा हाँ, था हाँ, मैं। हाँ, हाँ। तो हाँ, तो ये चीज हो गई है तो फिर आज भी हम बदल सकते हैं हम चीजों को। लेकिन अगर हमारे पास वो होना चाहिए जो जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर इस तरह की सोच वाले लोग होने चाहिए कि समाज सुधारक हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, और जो फिलोसोफर भी हो वहां पर, इस तरह के हुँ। लोग हो। लेकिन अगर वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जैसे ओम राउत ने फिल्म बनाई है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई है, उनको हर लगा कि पिक्चर उनके पैसे पास कमाने के लिए एक। बनाई जाती है। हाँ हाँ, मतलब वो तो एक होने, लेकिन एक जैसे ऐसे राजा मौली है, वो भी एथियस्ट, लेकिन उनकी जो फिल्म आई है वो पैसा कमाने के लिए लगता नहीं है मुझे। नहीं वो देखो, एक मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पिक्चर सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है। मैं कह रहा हूँ कि हर पिक्चर पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है। अगर पैसों की कमाई नहीं होती तो लोग पिक्चरें बना भी नहीं पाते। पर मैं यहाँ पर फिल्म में कुछ जोड़ रहा लोग हूँ पिक्चर इसीलिए बनाते मैं। हैं कुछ लोग पिक्चर हाँ बनाते हैं, बोलते हैं कि ये एक एंटरटेनिंग स्टोरी है, ये एक धांसू एक्टिंग है इसमें, इसको आगे देखो और मुझे पैसे दो। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तो भगवान के लिए बनाई है। वो ढकोसला होता है और वही हुआ वो है इस गलत चीज़ हो। में। हाँ, हाँ हाँ बट ठीक है अर्जुन, हाँ, आई वुड लाइक टू मूव ऑन इफ दैट्स ओके। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, बाय-बाय। That was Arjun, and that was the last caller of today. Let me go through a few comments before I end today's live stream. We are already at 1 hour 40 minutes. Let's make it 45. Right. Vinod says if OMG was released today, it would have faced a lot of backlash from right wing. If OMG was made today, it would have received a backlash from Paresh Rawal himself, who has completely gone over to the dark side. Um, Bhaswat says, Vimo, you said that when people put in times of distress would revert back to their religious identity, and you are also not far free from that. Could you explain this further? I'm saying कि the influence that our religion of birth has on us
is not so easily gotten rid of. So अगर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ था पर मेरे ऊपर हिंदुइज्म कोई पावर एग्जर्ट नहीं करता, I don't think they should be that confident about it, because a lot of times it is hard to know even the levels to which we are affected by our family's religion. मैं सुपर चैट्स को बिल्कुल थैंक यू आज बोलना भूल गया, सॉरी अबाउट दैट. बर्नाली, थैंक यू फॉर द 100 रुपी सुपर स्टिकर, मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच. Chikur Chuchum says, hello Vimoh, keep going and growing. By the way, nice shirt. Thank you, Chikur. It's a shirt that I only wore for one reason today, and that's because I haven't worn it in a long time. Valkyrie, thank you for the $1.99. Hindu will be biggest victims of theocracy as in Iran. Yeah, I've told people so many. Like, people keep fantasizing about, अरे हम जर्मनी बन जाएंगे, fascist state बन जाएंगे, and I'm always like, there is a bigger risk of we becoming Iran, something like a cultural revolution. Turning it into a Hindu state is the bigger threat. Hitler type का चीज़ यहाँ पे होने का चांस काफ़ी कम है, because we are not that kind of a society. We are not that simple of a society. पेपे, अरे भाई तुम्हारा नाम पेपे क्यों है बे? ये क्या पेपे द फ्रॉग वाला आइडिया? Don't use problematic names here. Aren't both atheist and theists the same boat thinking they're different? No, of course not. Are stamp collectors and non-stamp collectors on the same boat? What kind of stupid argument is this? Freud says, I'm baffled by how low IQ these anti-religion arguments are. Expected better from Vimo's audience. Well, I didn't manage to look at any of these arguments, but if you want, you can come live with me on screen next Saturday and we can talk about these arguments. Archived knowledge says, brown panic, that's only ये किसी और चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं. World War II was a discriminated against religious community. Connecting artist says Samsara by Saksham Garg and Aliens in Delhi by Sami Ahmad Khan. Hey Sami, I know Sami. Sami is a good writer. I think I've read some stories by him. And I think I've even met him in the Nebula Award conference once. Ex-Hindu says, in Adipurush, Bajrangbali speaks the language that the Bajrang Dal routinely uses. Yeah. So if people, what I was saying, if people thought that they will let something like the Bajrang Dal do the things that it does and it will remain, it will not affect their gods, then people are stupid. Such behavior, if you encourage in society, will eventually poison everything. And says, why do Bhakts get scared when it comes to rise of the Muslim population? It's not about Bhakts and it is not about Muslim population. In any country, the majoritarian group will get scared and tell horror stories about what is going to happen when those people become too many. There is this thing that happens in America called the white replacement theory, where white people are fantasizing about, not fantasizing, they're really afraid of the fact that one day white will be a minority community in America and that most people are going to be some variety of people of color. It's just a function of majoritarian paranoia or fear-mongering. Ankit says, I find it hard to believe that OMG, the movie, played a role in developing my atheism. Yeah. There are works of literature that have some kind of effect on us when we are growing up. And a necessary part of growing up is growing up and realizing that those works of literature are not as grand and great as we remember them being from our childhood. Shalin Upadhyay says, what is an effective way to react when someone claims that the concept of gender identity is flawed and supports their argument by referring to otherkins or furries who identify as animals? I don't necessarily understand what the question here is, so I will refrain from answering it. Shalin, if you want to come in the next episode and talk to me face to face, you should feel free to do so. Ice Holocum says, भाई अपोजिट व्यूज वाले को भी ले लो, सेम चीज सुन के पक गए हैं. आइस हॉलो, मैंने तो बोला था कि अगर कोई अपोजिंग व्यू वाला आता है तो मैं उसके साथ डिबेट करने को उसको प्रायोरिटी दूंगा. अगर कोई चैट में आता है, स्क्रीन पे आता है और प्राइवेट चैट में मुझे बताता है कि आई डिसएग्री विथ यू, आई वांट टू डिबेट यू ऑन दिस टॉपिक, मैं उनको पहले लूंगा. पर आया नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी किसी को बना सकता हूँ. यू शैल बिकम माई एनिमी फ्रॉम दिस एपिसोड.
Pepe says both are just believers not seeking the truth, both forming conclusions. Nope, that's not the case. I think you have a great misunderstanding of what atheism is. Feel free to come join me on a call next Saturday and we will talk about it. I'll be happy to clear your doubts about this shit. X Hindu points out very accurately to Pepe, atheism is the absence of belief, not that any God exists. It is not necessarily the belief that God does not exist. Yeah, that is the misunderstanding I was referring to. Right. So I think that is how we reach the end of this episode. काफी लंबा हो गया, 1 घंटा 45 minutes almost. Before I leave, I'd like to remind everyone that if you can support this channel by becoming a member by clicking the join button below. And when you do so, you will be supporting this channel and helping me continue my work. You can also support this channel on Patreon at patreon.com/Vimoh or on vimoh.stck.me where there is a support button. If you click on it, you can make a one-time contribution of any amount of your choice. And with that, we reach the end of this episode. I will get rid of the ticker. And hold on, कैसे end करते हैं? मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. Yeah. So the next time I see you will be Wednesday at 8 p.m. On Wednesday, I don't take callers on screen. I just read comments and I respond. So if you want, you can come on Wednesday and we'll talk. Until Wednesday, please take care of yourselves and good night.